Good afternoon and welcome to the second semi-final of the Himalayan Cup as Garwal Heroes take on the Assam Rifles in what promises to be an intriguing semi-final battle. We caught up with the coach of the Garwal Heroes earlier on. Let's hear what he had to say. और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गढ़वाल हीरो जिनकी टीम शानदार प्रदर्शन करती आई है। और अब ये जो मुकाबला है सेमीफाइनल, हमारे साथ मौजूद है विवेक रावत जी। रावत जी, सेमीफाइनल मैच है और आपने अब ग्राउंड में भी एडजस्ट कर लिया है और असम राइफल की टीम को भी आपने देख लिया होगा। तो आपकी जो टीम है जो क्वार्टर फाइनल खेली थी वही टीम खेल रही है या कुछ चेंज किया जाएगा? धन्यवाद। टीम हमारी वही है जो हमने क्वार्टर फाइनल में डाली थी। सेम प्लान है, वही बस हमको प्लान एग्जीक्यूट करना है और 3 पॉइंट लेने हैं आज। रावत जी, जो सेमीफाइनल है, आप तो काफ़ी समय से फुटबॉल भी खेले हैं, कोचिंग भी दे रहे हैं, तो सेमीफाइनल एक ऐसा मैच होता है कि जहाँ पे जीतने से टीम सीधे फाइनल खेलती है और फाइनल खेलना हर टीम का सपना होता है। तो इस मैच का कुछ अलग प्रेशर होता है क्या खिलाड़ियों पे? प्रेशर रिलीज़ करने वाला है, प्रेशर रहता है, ज़रूर रहता है। अब हमारा कोच का काम यही है कि हमको वो प्रेशर रिलीज़ करना है। वो प्रेशर हम लें, प्लेयरों तक ना जाने दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो फिलहाल Nicely said there by Vivek Rawat, the coach of the Garwal Heroes. This is how they line up. Gaurav Rawat, Neeraj Bhandari, the skipper, Lionel, the keeper, Abhishek Negi, Sukraj Singh, Richage, who scored in the last game, Lal Vansham, Dhruv Sharma, Nirmal Singh, and Jaydeep, who also scored along with Nirmal. And on the substitutes bench, it's Sapan, Aryan, Franas, Ravi, Suraj Singh, Suraj, Ravi Thapa, Rohit, and Ronit. We also caught up with the Assam Rifles coach. Let's hear what he had to say before the semi-final. नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है देहरादून के पेवेलियन मैदान में। अब खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल और ये मैच खेला जाएगा असम राइफल वर्सेस गढ़वाल हीरोज। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असम राइफल के कोच थांग जी। तो थांग, बहुत बड़ा मुकाबला है, जीते तो फाइनल में, बहुत ये बड़ा टूर्नामेंट है, तो क्या टीम जो आपकी खेली थी वही टीम खेलेगी या चेंज किया जा रहा है? कैसे देखते हैं इस मैच को? सर, प्लेयर तो 1-2 चेंज होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर। आपकी जो टीम है उनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में शानदार था, तो फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल मैच होता है यहाँ पे कोई भी टीम लूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि जीतने में फाइनल होता है। तो क्या प्रेशर कुछ रहता है टीम के ऊपर सेमीफाइनल मैच में? नहीं सर, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, जो अपना गेम है वही खेलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो ये थे थांग, कोच असम राइफल। That was Thangkuki, coach of the Assam Rifles, and this is how they line up. Manichandra Singh, who was very good yesterday, Rahul, Gagan, Borwa, Kongsit, Haukip, Johnny, who was superb, as was David, Rabha, Arjun, and Roger. The starting lineup. And on the bench, a lot to choose from, but they didn't make any substitutions. There's Deveshwar, Sukumar, Daniel Torres, Kipgen, P. Haukip, and Devendra Singh, who drops to the bench today after a very good display yesterday versus the CRPF side, who they beat in a penalty shootout. And today, Rohit will be over the proceedings with the whistle, assisted by Churchill, Kurumaya, Satri Singh, and the match commissioner is Deepak Negi. And the dignitaries will make their way to the pitch to greet the players as they have done so throughout this Himalayan Cup. What a tournament it has been, with so many goals being scored and a great amount of talent on display. So there are the referees and the teams lining up. Garwal Heroes in their yellow strip, Assam Rifles in their blue strip today. Yesterday they wore white. And this promises to be
a close, exciting encounter between two quick sides and also sides with good defense at the back. The first semi-final was a cakewalk for Himachal FC. I don't think it will be the same for either of these sides today. Garwal Heroes did win yesterday by 3 goals to 1 in their quarter-final. Not much rest for these sides, mentally or physically. Just a night's sleep as they get ready for this semi-final. An attempt to book a spot in the final. It's time for the dignitaries to take the pitch. As I introduce you to my co-commentator, Mr. MS Negi, who will take us through this game, this high voltage semi. और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगे। He will be joining us soon as we see dignitaries meeting the players. Very nice touch which you get to see in this game. Don't really see this all around the country in most of the games. This is the close proximity at which everybody is together in this tournament, the Himalayan Cup. येलो जर्सी में गढ़वाल हीरोज दिल्ली और ब्लू जर्सी में और एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दूसरे सेमीफाइनल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं दोनों टीमें मौजूद हैं। मध्य रेखा में ऑनरेबल चीफ गेस्ट यहां पे पहुंचे हैं अभिनव कुमार, ये विशेष सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, तो बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने परिचय लिया है। और अब ये आखिरी फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं। मैच शुरू होने से पहले किक ऑफ रेफरी की विसिल बजेगी, लेकिन एक जोरदार मुकाबला पहले भी हुआ, पहला सेमीफाइनल जिसको हिमाचल एफसी ने जीता। और अब ये एक और हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि गढ़वाल हीरोज भी एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, एक बहुत पुराना क्लब है दिल्ली का, और इस टीम को बहुत बड़े पॉइंट्स दिए जाते हैं। गढ़वाल हीरोज अच्छी टीम मानी जाती है। और इस बार ज़रूर ये जो टीम आई है गढ़वाल हीरोज पेवेलियन मैदान में, इनके जो खिलाड़ी हैं काफ़ी यंग हैं और लगभग 18 साल की उम्र के खिलाड़ी ज़्यादा हैं गढ़वाल हीरोज में, लेकिन उनका खेल दमदार है। और देखने वाली बात यही है कि मजबूत टीम है यहाँ पे असम राइफल। तो क्या असम राइफल को रोक पाएगी गढ़वाल हीरोज, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुकाबला शुरू होने वाला है और जो ऑफिशियल है, जो रेफरी है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। टॉस हो रहा है और टॉस के बाद दर्शकों को इंतज़ार है इस हाई वोल्टेज मुकाबले का। पहला मुकाबला भी बहुत शानदार हुआ था और इसमें अब देखते हैं असम राइफल, जिन्होंने सीआरपीएफ को कल पराजित किया था, आज किस तरह का खेल दिखाती है। और सबकी नज़रें इस मैच पर टिकी हुई हैं। देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट और अब आखिरी चरण में है। एक टीम जो पहुंच चुकी है फाइनल में, वो है हिमाचल एफसी, और अब दूसरी टीम का फैसला हो जाएगा कि कौन सी वो टीम है जो फाइनल में पहुंचेगी। तो अभी तक जितने भी खेल एक्सपर्ट हैं वो असम राइफल को मजबूत टीम मान रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जो टीम कागजों में मजबूत है, जिन्होंने सीआरपीएफ को पराजित किया है, क्या आज इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज को शिकस्त देगी। मुकाबला शुरू होने वाला है और आखिरी जो औपचारिकता है मैच शुरू होने से पहले कि उनको किया जा रहा है। तो पीले रंग की जर्सी में जो टीम है, ये है टीम गढ़वाल हीरोज दिल्ली, और इनका मुकाबला होगा असम राइफल के साथ। असम राइफल भी एक मजबूत टीम है, उनकी भी फॉरवर्ड लाइन अच्छी है। तो एक मैच का परिणाम भले जो भी हो, लेकिन दर्शकों के लिहाज से एक रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है और दोनों ही टीमों के कोच इस मैच की इंपोर्टेंस को जानते हैं। ये देखिए आप, नेवी ब्लू कलर में ये टीम है, शानदार लग रही है असम राइफल। तो क्या असम राइफल की टीम शिकस्त देगी गढ़वाल हीरोज को, या गढ़वाल हीरोज के यंगस्टर्स शिकस्त देंगे, इसका फैसला हो जाएगा 90 मिनट के बाद। और अब देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसे करती है शुरुआत असम राइफल। तो आज का दूसरा सेमीफाइनल देहरादून के पेवेलियन मैदान से। अब आप देखिए क्या शानदार दृश्य है। मध्य रेखा में पीले रंग की जर्सी में है टीम गढ़वाल हीरोज, नेवी ब्लू कलर में टीम है असम राइफल। ये मेन रेफरी जो मैच खिलाएंगे, और ये मैदान गवाह है, हिस्टोरिकल मैदान है। इस मैदान में बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं और इस बार हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं और बहुत अच्छा दृश्य है। बस आखिरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, किक ऑफ के साथ ही खेल शुरू हो जाएगा। जो मेन रेफरी हैं
वो घड़ी की सुइयों को देखेंगे और विसिल बजा देंगे और फिर शुरू हो जाएगा एक दिलचस्प मुकाबला। तो फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन होगी उसका फैसला होगा इस मैच से, और मैच बस शुरू होने वाला है। सारी औपचारिकताएं पूरी और गोलकीपर ने भी इशारा कर दिया है और सारी औपचारिकताएं की जा रही है। तो देहरादून का पवेलियन मैदान गुलजार है, खिलाड़ियों से, दर्शकों से, फुटबॉल का जुनून है। देहरादून फुटबॉल का हब है उत्तराखंड में, और यहाँ पर बहुत सारे क्लब भी हैं, यहाँ पे लीग्स भी होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब भी हैं। लेकिन ये जो आयोजन है ये ऑल इंडिया आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसमें कई बड़ी टीमों ने शिकस्त खाई है। और अब आखिरी टीम होगी जो फाइनल में पहुँचेगी, और हिमाचल FC 3-0 से उत्तराखंड एसोसिएशन को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दूसरी टीम कौन सी होगी इसका फैसला होगा आज इस मैच से, जिसमें दो टीमें आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। नेवी ब्लू कलर में है असम राइफल, मजबूत है इनका दावा, और येलो कलर की जर्सी में है जो ब्राज़ील का भी कलर होता है, ब्राज़ील की टीम इस कलर को पहनना पसंद करती है। तो ऐसा लगता है कि बस कुछ सेकंड बाकी हैं, गेंद को रख दिया गया है किक ऑफ के लिए। रेफरी की विसिल बजते ही शुरू हो जाएगा मैच। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, और ये मैच खेला जा रहा है असम राइफल वर्सेस गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली। तो क्या गढ़वाल हीरोज़ के लड़ाके आज असम राइफल की मजबूत डिफेंस को भेद पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो मैच का रोमांच बना रहेगा, आप बने रहिए पैरेलल स्पोर्ट्स के साथ। शानदार मैच आप देख रहे हैं, और अब रेफरी ने इशारा कर दिया है, गेंद को रखा गया है किक ऑफ के लिए, और अब गेंद आई है असम राइफल के पास, मध्य रेखा पर गेंद है और मैच शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर दर्शकों को भी मैच शुरू होने का इंतज़ार था। ये दूसरा सेमीफाइनल है और इस मैच को जीतने वाली टीम हिमाचल के खिलाफ खेलेगी परसों 7 तारीख को फाइनल। कल थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा। तो फिलहाल देहरादून के पेवेलियन मैदान में शुरू हो गया है दूसरा सेमीफाइनल, और ये सेमीफाइनल मैच जिन दो टीमों के बीच खेला जा रहा है वो दो टीमें आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और पीले रंग की जर्सी में गढ़वाल हीरोज है, नेवी ब्लू में असम राइफल, और पहले मिनट में ही असम राइफल की टीम ने धावा बोल दिया है गढ़वाल हीरोज के ऊपर। बाएं छोर से हमला किया जा रहा है अच्छी रणनीति के तहत मैन टू मैन पासेस के जरिए, और ये लॉब आया जरूर है लेकिन गोलकीपर ने इसे आसानी से नियंत्रण में लिया। तो अच्छी फुटबॉल खेली जा रही है देहरादून के पेवेलियन मैदान में। गोलकीपर के हाथों में गेंद है और उन्होंने गोल किक के साथ गेंद को आगे बढ़ाया जरूर था, लेकिन खिलाड़ी इसको रिसीव नहीं कर पाए। तो अब असम राइफल के खिलाड़ी पहले मिनट से ही तेज़ तर्रार फुटबॉल का मुजाहरा करते हुए, तो क्या ये मैच भी पहले मैच की तरह होगा, क्या इसमें भी हाई स्कोर होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है, अच्छी शुरुआत हुई है, दोनों टीमें मैदान में एडजस्ट हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी मैच खेल चुकी हैं इससे पहले। और ये 27 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कम उम्र के खिलाड़ियों को मौका दिया है गढ़वाल हीरोज ने, लेकिन अच्छी टीम है ये भी, इनकी फॉरवर्ड लाइन अच्छी है और स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। और सिलीगुड़ी के खिलाफ 10 मिनट के अंदर 2 गोल मार दिए थे गढ़वाल हीरोज ने, और वो टीम उभर नहीं पाई आखिरी समय तक। 3-1 से शिकस्त, 1 के मुकाबले 3 से शिकस्त दी कंचनजंगा सिलीगुड़ी को इस टीम ने, जो पीले रंग की जर्सी में गढ़वाल हीरोज और नेवी ब्लू कलर में असम राइफल के खिलाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। और आज असम राइफल की टीम ने अपना कलर भी चेंज किया है, तो अच्छी लग रही है टीम। दोनों टीमों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि खिलाड़ियों को देखना बड़ा आसान हो जाता है अगर इस तरह अपोजिट कलर पहनती है टीमें। तो येलो और ब्लू के बीच चल रहा है मैच, तो मुश्किल नहीं होगी खिलाड़ियों को ढूंढने में। फिलहाल खेल जारी है और ये खेल हो रहा है इस समय गढ़वाल हीरोज़ के हाथ में। मौका यहाँ पे बना सकती है टीम, लेकिन आखिरी समय में डिफेंडर ने गेंद को थोड़ा दूर किया खतरे के क्षेत्र से। अभी भी गेंद पर नियंत्रण को लेकर कसमकस जारी है। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में हम आपको दिखा रहे हैं ये शानदार सेमीफाइनल मैच गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली और असम राइफल के बीच। असम राइफल फोर्स की टीम है और फोर्स की जो टीमें होती हैं दमखम के लिए जानी जाती हैं। पूरे 90 मिनट 120 मिनट तक तेज़ तर्रार फुटबॉल खेल सकती है ये टीमें। तो फोर्स की टीमों को स्टेमिना की कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बीच ये गेंद आई है लेकिन कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में खेला जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल। गेंद को रखा गया है गोल किक के लिए। 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच। पहले 2 मिनट का खेल हुआ है और बढ़िया मुकाबला चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है ये और इस मैच की विजेता टीम खेलेगी हिमाचल के खिलाफ 7 तारीख को फाइनल। लेकिन कौन होगी वो टीम, इसका फैसला इस मैच से होगा। फिलहाल मैच जारी है, मध्य रेखा के पास खेल हो रहा है और टीम पीले रंग की जर्सी में गढ़वाल हीरोज है और असम राइफल है ब्लू कलर में। तो बढ़िया मैच है ये और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ रोमांच होगा इसमें, कुछ अच्छे मूव मिलेंगे, कुछ अच्छे गोल, कुछ अच्छे सेव देखने को मिलेंगे। इस बीच गेंद को बढ़ाया, लंबा थ्रू पास निकाला है, यहाँ पे खिलाड़ी जा रहे हैं, खतरा हो सकता है यहाँ पे। 10 नंबर की जर्सी जो एक स्ट्राइकर की जर्सी मानी जाती है और ये ग्राउंडर निकालने का प्रयास था, लेकिन ऐसा लगता है गेंद गोल लाइन से बाहर चलेगी। तो ये एक अच्छा मूव बन सकता था, लेकिन आखिरी समय में थोड़ा सा मिस पास हुआ, गलत पास दिया उन्होंने, गलत गेंद बढ़ाई, तो जो मौका बन रहा था वो जाता रहा।
मिनट का खेल हुआ है और अभी 3-3.5 मिनट के खेल में असम राइफल ने अपने इरादे तो जताई दिए हैं, दिखा दिए हैं और जानते हैं बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा मैच है और बहुत अच्छी प्राइज मनी इस प्रतियोगिता में दी जा रही है। तो फिलहाल अब गेंद आ गई है असम राइफल के हाथ में। हेडर के जरिए गेंद को गोलकीपर तक पहुंचाया गया। गोलकीपर ने धीरे से गेंद को सरका दिया अपने साथी डिफेंडर के लिए। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रहा है दूसरा सेमीफाइनल और ये मैच जिन दो टीमों के बीच खेला जा रहा है। स्क्रीन में अगर आप देखेंगे पीले रंग की जर्सी में है टीम गढ़वाल हीरोज, नेवी ब्लू कलर में है टीम असम राइफल। दूसरा सेमीफाइनल देहरादून के पेवेलियन मैदान से द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का ये देख रहे हैं आप और बढ़िया मैच चल रहा है। शुरुआत काफ़ी तेज़ तर्रार की है असम राइफल ने, हालांकि स्कोर लाइन अभी नहीं है और अब खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं गढ़वाल हीरोज के, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को अपने नियंत्रण में लिया और गेंद को लेकर खुद ही आगे काफ़ी दूर तक सफ़र तय कर लिया था उन्होंने, लेकिन गिर पड़े और मैदान थोड़ा अनइवन भी है। और अब जवाबी हमला करने की कोशिश में है गढ़वाल हीरोज दिल्ली की टीम और गिर पड़े वहाँ पे खिलाड़ी और गेंद भी छिन गई उनसे। तो गेंद को लेकर अब 7 नंबर की जर्सी में आगे बढ़ रहे खिलाड़ी। दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश में है असम राइफल की टीम। अच्छा मूव बन रहा है ये और अंदर अगर लॉब आता है, माइनस आता है तो खतरा हो सकता है। यहाँ पे हेडर के जरिए डिफेंडर ने गेंद को थोड़ा दूर किया है, खतरे के क्षेत्र से दूर हो गई है गेंद। तो तेज़ तर्रार फुटबॉल एक बार फिर दूसरे सेमीफाइनल में भी पहला मैच हिमाचल एफसी ने जीता। अच्छी फुटबॉल का मुजाहरा किया हिमाचल एफसी ने और अब आप देख सकते हैं ये मैच भी लगभग जहां से वो मैच खत्म हुआ था वहीं से मैच शुरू हो गया है। स्पीड है गेम में और दर्शक भी यही चाहते हैं। फुटबॉल देखने का मज़ा भी तभी आता है जब अच्छी फुटबॉल हो रही हो, आक्रामक फुटबॉल हो, स्कोर के लिए टीम जाती है। देखिए आप रिप्ले में किस तरह से यहाँ पे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है इस मैच को जीतने का। तो 5 मिनट का खेल हुआ है और कोशिश कर रही है असम राइफल की टीम जल्दी से खाता खोल दे और अभी ऐसा हुआ नहीं है। बढ़िया मैच है और एक रोमांचक मुकाबला देख रहे हैं आप लाइव। और ये गेंद बढ़ाई गई है, लंबा लोब आया है बॉक्स के आसपास, पेनल्टी बॉक्स के बाहर गेंद है। यहाँ पे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन गेंद पर नियंत्रण बनाया वहाँ पे डिफेंडर ने और डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों ने गेंद को अब जाकर क्लियर किया है। मध्य रेखा को पार करता हुआ गेंद आया है और गेंद पर एक बार फिर आए हैं खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज के। काफ़ी देर के बाद मूव बन रहा है गढ़वाल हीरोज का, लेकिन बीच में डिफेंस लाइन के खिलाड़ी चौकन्ने थे और आपस में ही थोड़ा सा भिड़ गए खिलाड़ी असम राइफल के, क्योंकि दबाव एक ऐसी चीज़ है कि इतना समय नहीं था उनके पास देखने का कि सामने एक और डिफेंडर मौजूद है। तो फिलहाल गेंद को रखा जा रहा है किक के लिए। अच्छा मैच चलता हुआ देहरादून के पेवेलियन खेल मैदान से आपको दिखा रहे हैं आज का दूसरा सेमीफाइनल और ये मैच खेला जा रहा है असम राइफल और गढ़वाल हीरोज के बीच। नेवी ब्लू कलर में है टीम असम राइफल और पीले रंग की जर्सी में है टीम गढ़वाल हीरोज। तो गढ़वाल हीरोज और असम राइफल के बीच खेला जा रहा है ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। काफ़ी बड़ा मैच है। It is a great match indeed between these two sides, and so far it has been the Assam Rifles who have had more of possession, and it was already by this time that the Garwal Heroes had taken the lead in their quarterfinal yesterday. Jaydeep scoring a goal from a free kick, nicely taken from outside the box on the left hand side. But it's not going to be that easy today against a resilient Assam rival side who held CRPF to a 0-0 draw and then won the game yesterday on penalties. Chance here for the Garwal Heroes, and they should get their first corner of the game. Manichandra Singh was incredible yesterday, making save after save after save, and then finally doing the same thing in the penalty shootout and winning it for the Assam Rifles. There he is. And this is the coach of the Garwal Heroes, Vivek Rawat. Good ball played into the box. The header is there, and that is easy picking for Manichandra Singh. And as we see that once again, not the freest of headers. That's why I wasn't really able to get too much on it. And Vivek Rawat at his interview said something which is quite resonant in my head, and it's when he was asked about if there's any pressure on the players, he said no, there's no pressure on the players. That's what we are there for, the team coaches, the managers. It's for us to hold that pressure and not the players. It's about them to just play and we can worry about everything else. And that was very nicely said by him.
Very good in possession are the Assam Rifles. We saw that yesterday against a very good CRPF side. Ball retention is good in the midfield when it comes to Haukip and Kongsit. And yesterday Kipjem was very good, but he's not starting today. In his place it is Haukip. Gagan Kalyan also coming in for Devendra Singh, who was defending really well yesterday. On the other hand, for the Garwal, he was Jaideep, Nirmal Singh, Vish, Dhruv Sharma, really good in attack. Also, Vansh Digdo in the midfield, just holding things for them. Once again, in a knockout game, it's all about the first goal. Whoever can get a first goal here could set the tempo of the game. If Assam Heroes get the first goal, they will just keep possession, play the game out, slow it down a bit. Garwal Heroes like to play attacking, quick, free-flowing football, and I feel that even if they get the first goal, they will continue to do that. As we see this foul on Diengdo. Long ball played by K. Lal. Forgot to mention him, he is so good in that midfield. As is Richage Karbani, who scored yesterday. And the skipper Neeraj Bhandari on the right wing, having a stellar game yesterday as well. So quite a few talented players on show this afternoon, but only one set of them will make it to the final day after tomorrow. Here is Jaideep. Opened the scoring yesterday. Plays it to Richage. Scuffs that ball slightly, but should be kept in by Neeraj. Goes for a long ball himself. Has fallen towards Vansh. This could be a chance, but it just evades Richage Kharbani, who does really well to keep the ball in, but can't play it towards Neeraj. Rifles now getting into the game slowly. Was yesterday's player of the match. Picks up the ball and starts the attack. Borua also very good yesterday with his display at the left back position. Good attention there from Nirmal Singh Bisht. Richage can't keep this one in as compared to the last time. Yeah, the Rifles. Down the left wing goes Roger Singh, usually plays more centrally. Now does go central, David. Good piece of skill there from Hokip coming into the side. Good switch of play again. End-to-end stuff so far. This promises to be a very good semi-final. Don't take your eye off it for a second. Well, maybe now you can, with the ball going out of play for a bit. Apologies there from Nirmal Singh Bisht. There's Roger. Bit of a high boot from him. K. Lal went down, but will have to get back up. There's Arjun. Takes a shot from the left foot. Quite some distance. Now it's Dhruv. Very calm and composed on the ball. But not similar for Vansh on that occasion.
Here's Okip. Does really well, skips past two players and then takes a shot from distance, and it's an equal distance away from the goal over the crossbar. Don't mind shooting from there when you start off the game. Almost quarter of an hour in, no goals yet in this semi-final. Garwal Heroes scored 3 yesterday. Assam Rifles could not even get one, but they didn't concede one either. Came through on penalties. They would love to get a goal here though. That ball too long for the likes of David Lalrin Chana. There's Okip. He's been very impressive and gets a foul there, which the Heroes are not too happy with. "15 minutes in, still goalless here at the Pavilion Ground in Dehradun." Strong header away there from the Heroes and a clearance without taking any chances as well. Still no real chances to talk about as such. Did get a header, of course, with the Heroes, but it was comfortably in the hands of Manichandra Singh. तो बढ़िया मैच चल रहा है, हालांकि स्कोर नहीं हुआ है अभी, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच। और देहरादून के पेवेलियन खेल मैदान में ये दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। नेवी ब्लू कलर में असम राइफल और येलो कलर की जर्सी में है टीम गढ़वाल हीरोज़। तो अभी तक गढ़वाल हीरोज़ के लिए अच्छा है कि असम राइफल की मजबूत टीम को उन्होंने रोक के रखा है। 16 मिनट का खेल हुआ है, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच देहरादून के पेवेलियन मैदान में। ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट द हिमालयन कप आप देख रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल है। तो अब आज फैसला हो जाएगा इस मैच से कि कौन सी टीम होगी दूसरी जो खेलेगी हिमाचल एफसी के खिलाफ 7 तारीख को फाइनल। फिलहाल मैच में दोनों ही टीमों ने मूव बनाए ज़रूर हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा वेल प्लान मूव नहीं देखा हमने जिसमें गोलकीपर की थोड़ा परीक्षा हो सके। फिलहाल दोनों ही टीमें संभल कर खेल रही हैं और ऐसा नहीं है कि गढ़वाल हीरोज़ नहीं प्रयास करी। गढ़वाल हीरोज़ के खिलाड़ी भी आ रहे हैं बार बार। और अब पहले जो मोमेंटम बना हुआ था नेवी ब्लू कलर की जो टीम है असम राइफल, उसके मूव ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 मिनट से हम देख रहे हैं कि जो गढ़वाल राइफल की टीम है उन्होंने भी थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और वो भी एग्रेसिव खेल रहे हैं, अटैकिंग मोड में हैं। और हर टीम यही चाहती है कि वो जल्दी गोल कर लें तो मैच में स्थिति मजबूत कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी और फाइनल खेलना हर बड़ी टीम का सपना होता है। प्राइज़ मनी 5 लाख रुपए इस प्रतियोगिता में है पहले स्थान के लिए। तो ये जो सारी जद्दोजहद है, जो ये मेहनत है, ये जीतने के लिए की जा रही है, फाइनल में पहुंचने के लिए की जा रही है। और आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल एफसी ने उत्तराखंड की टीम को 3-0 से पराजित किया और अब ये मुकाबला चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है मैच। नेवी ब्लू कलर में असम राइफल गेंद मध्य रेखा में है और खिलाड़ी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉरवर्ड लाइन में भी इस तरह का मूवमेंट नहीं दिख रहा जिससे गोलकीपर की परीक्षा हो सके। इस समय गेंद कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा लॉब आया जरूर है, यहाँ पे मौका बना सकती है टीम, खतरा है, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को लास्ट मोमेंट में थोड़ा खतरे के क्षेत्र से दूर किया। अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है कह सकते हैं हम, लेकिन फोर्स की टीम है, अच्छी टीम है, काउंटर अटैक करने का प्रयास कर रही है टीम नेवी ब्लू। असम राइफल 10 नंबर की जर्सी पहले खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़े, उन्होंने धीरे से पास बढ़ाया है और ये लॉब आया है बॉक्स के अंदर। गोलकीपर का अच्छा कलेक्शन, नीट कलेक्शन, पहले अटैम्प्ट में ही गेंद को कलेक्ट कर लिया। तो जो खतरा लग रहा था इस समय गढ़वाल हीरोज़ के ऊपर वो अब जाता रहा। बढ़िया मुकाबला चल रहा है और पीले रंग की जर्सी में जो टीम है ये है गढ़वाल हीरोज़ और असम राइफल के बीच चल रहा है ये मैच। तो अच्छा मैच है ये और दर्शकों की निगाहें इस मैच पर लगी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर फुटबॉल के लिए जुनून है। देहरादून में भी फुटबॉल की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती रही हैं बहुत लंबे समय से और ये जो पेवेलियन खेल मैदान है जहाँ पर ये चल रहा है, देखिए आप रिप्ले में किस तरह से टैकल कर रहे थे तो रेफरी ने इसे डेंजर माना।
0-0 की बराबरी पर चल रहा है फिलहाल मैच। और दोनों टीमों ने प्रयास ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी गोलकीपर की परीक्षा नहीं हो पाई। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे थे, ये विवेक रावत कोच गढ़वाल हीरोज़ के इंस्ट्रक्शन बाहर से देते रहते हैं। और फुटबॉल में आपने देखा होगा जो कोच है वो भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं मैच में। और आपने बड़े बड़े मैचों में देखा होगा कोच चिल्लाते रहते हैं साइड लाइन के बाहर से। इस समय ये मूव बना रही टीम गढ़वाल हीरोज़ दाहिने छोर से 26 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने ये क्रॉस डालने का प्रयास किया, डिफ्लेक्ट हुई है गेंद, तो फ्लैग किक मिलेगा। और ये फ्लैग किक मिलेगा गढ़वाल हीरोज़ को। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस फ्लैग किक में। फिलहाल दोनों ही टीमें प्रयास कर रही हैं गोल करने का, लेकिन गोल अभी हुआ नहीं है। तो मैच में रोमांच जारी है। अभी 19 मिनट का समय हुआ है और इस 19 मिनट में शुरुआत में नेवी ब्लू कलर में टीम है असम राइफल, उन्होंने ज़्यादा हमले किए थे, लेकिन अब पिछले 7-8 मिनट से हम देख रहे हैं कि गढ़वाल हीरोज़ की टीम का भी मोमेंटम बन गया है, वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। और ये फ्लैग किक भी हासिल कर लिया है, तो ये बाएं पैर से लिया गया फ्लैग किक, खतरा हो सकता था यहाँ पे, अभी भी मौका है और ये हो गया है गोल। तो शानदार गोल। कहाँ तो ये लग रहा था शुरुआत में कि गढ़वाल हीरोज़ की जो यंग टीम है उनको शायद मुश्किल आएगी, लेकिन ये जवाबी हमला करने के बाद बैक फुट पर ला दिया असम राइफल को। फोर्स की मजबूत टीम के खिलाफ बढ़त हासिल कर ली है यहाँ पर गढ़वाल हीरोज़ ने। तो स्कोर 1-0 हो गया है। बढ़िया मैच चलता हुआ और अब आप देखिए कैसे हुआ गोल। ये फ्लैग किक लिया गया, फ्लैग किक के बाद गेंद वहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, ठीक से क्लियर नहीं कर पाए खिलाड़ी। यहाँ पर 2-3 खिलाड़ी थे और ये दन आता हुआ शॉट जाल में। तो ये गोल नंबर 1। स्कोर 1-0 इन फेवर ऑफ गढ़वाल हीरोज़। बहुत शानदार गोल। तो और थ्रोइन लेने के लिए आए हैं खिलाड़ी, थ्रोइन लेने के लिए अच्छा थ्रोइन लिया है, तो स्कोर कर लिया है। मैच का रोमांच अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये फोर्स की टीम आसानी से हार मानने वाली टीमें नहीं होती हैं। तो 1-0 की बढ़त के साथ अब गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली की टीम का पलड़ा इसमें थोड़ा भारी है। और अब ये काउंटर अटैक करने का प्रयास कर रही है टीम असम राइफल के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने गेंद बढ़ाई है और बाएं छोर से ये हमला अब बनेगा। तो क्या जवाबी हमले में गोल होगा? ग्राउंडर था ये, कमज़ोर था ये शॉट जिस पर मूव बन नहीं सकता था। तो फिलहाल खेल जारी है और अब एक बार फिर जा रहे खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज़ के 9 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी, तेज़ तर्रार खिलाड़ी हैं, वहाँ पे डिफेंडर जूझ रहे हैं उनसे, लेकिन गेंद रिलीज़ कर दी अब डिफेंस लाइन के खिलाड़ी ने। और अच्छा मैच हो गया है, अच्छी शुरुआत हो गई है और निश्चित तौर पर ये मैच भी रोमांचक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि असम राइफल भी एक मजबूत टीम है। Yes, it has been a good game so far. But as I mentioned, that there wasn't a real chance, and when it was fallen to the Garwal heroes, then Richesh Karbani with an absolutely spectacular half volley. Good save again to start off with from Manichandra Singh, but that shot from Richesh was unsavable. And now the heroes take the lead and take one step closer to facing Himachal FC in the final. Halfway through the first half, Assam Rifles need to start creating some chances. Didn't create too many yesterday. They are very good in possession, but in the final third, just something lacking, I feel. Not too much intensity. Scared to do something different. Need to get Roger Singh, their centre forward, more involved in the game as well. That will be a foul. Number 7, Neeraj Bandari brought down, just clutching his knee for the time being. Yeah, he didn't get stepped on there by Borua. Some medical attention to the skipper, and all the attention has been on the Garwal heroes because they've got an early goal once again, not as early as yesterday's quarter-final goal. Don't forget the Assam Rifles did play the later game, so they may be slightly
sluggish. Like we saw from yesterday's semi-final, what a high-intensity game that was. Garwal Heroes, on the other hand, had an easier game. Played at around 10:30, finished at around 12:30, then got the whole day of rest and recovery. Not the same for the Assam Rifles, though. And when you come into a semi-final like that, it could be telling, and it is so far for the Rifles. Looks like Bhandari is okay to continue. Long ball played, but nobody really there. So Raj gives the ball away. This could be a chance that the Assam Rifles were looking for. But that ball was absolutely unnecessary. Johnny Puya playing it towards Rabha, but it was so high that it was taking an eternity to reach Rabha, and by that time, the chance for a counter attack had gone. I mentioned that the first goal is important, and especially now that the Rifles didn't score yesterday, they won't be too high on confidence when it comes to getting a goal. Ball given away again, very lightly. Can't keep doing that, the Assam Rifles. Need to be better on the ball. Foul there versus Hokip. Borua tries to get away from Nirmal, can't do so. Nicely done there. Beautiful turn as well from Richage. Nice crossfield ball. Dhruv will get there early. And he's brought down, but no fouls as a referee. Garwal Heroes are not happy with that, but the Assam Rifles will continue. Counter-attacking opportunity, but the ball not up to the mark, and not for the first time in the last couple of minutes. They still have the ball though. They'll have to recycle it now. Nicely played towards David, who has not been his best so far. Now he can though. And now the Assam Rifles at least have a corner which they can try and conjure something up from. Lionel didn't have much to do yesterday in the quarterfinal except for a couple of corrections and basic saves. We concede one towards the end though. Johnny plays the ball in. That is a really under par corner. Will get cleared away. And there's something about the set pieces in this tournament which just haven't been up to the mark in the knockout stage. And a shot from distance from Rahul was not too impressive either. Slightly loose now are the Assam Rifles. They don't want to do that because they're giving the Heroes a chance to get a second. Good ball in from Dhruv. And the offside flag is up before Nirmal could go any further. Again, ball given away. As you take a look at the offside call, definitely onside for me.
Not easy though to make these decisions on just the naked eye. Again, the Rifles losing possession and in fact giving away a free kick. Richage has been so good today. And I'm not just talking about his sublime strike to give the Heroes the lead. Good game from referee Rohit so far. Not too many talking points, of course, in terms of the refereeing, but in terms of the football, of course, as you can see, lots being spoken about by the dignitaries. Subhash Arora there in the black cap. As we come to the 30th minute now, Assam Rifles really need to get going. Nicely done there by Lal, trying to find Diengdo. Okay, Pooz had a good start to this game. Well, one back by David. Now can the Rifles try and make something of that again? Not the best ball in. Probably to the feet is better. And here they really have an opportunity. David cuts inside, decides to play it inside. And the shot is a very one from Hokip. Offside flag has been raised. And the referee spots that early enough. Could have been a foul as well on that occasion from player in blue. Nicely taken by Neeraj, but just couldn't keep it inside the field of play. Haven't seen too much happening on that right hand side so far today. Jaideep also not too involved so far in the game. It has been more of a midfield run game in terms of either side, in fact. But not too many 50-50s, apart from the occasional headers here and there. He'll be happy with their start so far. Vivek Rawat. Diengdo loses possession. Nicely done there in the center of the park by Khongsit. Plays it to Okip. This is looking like a good move. Johnny decides to shoot from distance. I don't think that was the best option from him. Could have carried the ball a bit more and maybe got closer to the goal. Just there. Could have beaten, or at least tried to beat Abhishek Negi, the left back. Offside called relatively early this time round.
Again, the long ball being played towards Neeraj. They realize that they haven't done much to go towards the right hand side today. Now they do. Ball played into the box, well cleared away. तो पहले हाफ का आधे से ज़्यादा समय हो चुका है, 34 मिनट का खेल हो चुका है और अभी भी जो स्कोर लाइन है वो गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली के फेवर में है। 1-0 से लीड ले ली है और अब जो मैच है, मैच का रोमांच तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि असम राइफल एक फोर्स की टीम है। तो निश्चित तौर पर ध्रुव शर्मा जिन्होंने स्कोर किया गढ़वाल हीरोज़ के लिए, तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं वीआईपी स्टैंड में थोड़ा बहुत हलचल है और ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है तो वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हैं, सेलिब्रिटीज़, तो निश्चित तौर पर उनको रिफ्रेशमेंट आदि दिया जा रहा है। तो फिलहाल मैच जारी है, 34 मिनट का खेल हुआ है। स्कोर लाइन जो है गढ़वाल हीरोज़ के फेवर में 1-0 अभी भी बनी हुई है और अब डोमिनेट कर रही है, बॉल पोजीशन भी ज़्यादा है। तो गढ़वाल हीरोज़ की टीम जिसमें ज़्यादातर बहुत यंग खिलाड़ी हैं, काफ़ी कम उम्र के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके जो कोच हैं विवेक रावत, उन्होंने भरोसा दिखाया है इस टीम पर। ये हमला बनाया था, यहाँ पे मौका बन सकता था। अभी भी गेंद खतरे के क्षेत्र में है, पेनल्टी बॉक्स के थोड़ा बाहर है गेंद और ये बाएं छोर से एक बार खिलाड़ी आया, 8 नंबर की जर्सी पहने, उन्होंने गेंद को क्रॉस डाला जरूर था लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी रिसीव नहीं कर पाए और यहाँ पर भी थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई है गेंद। तो डिफ्लेक्ट होने के बाद गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई, तो गेंद को रखा जाएगा। गोल किक के लिए देहरादून के पेवेलियन मैदान में दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है असम राइफल और गढ़वाल हीरोज़ के बीच। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बढ़िया चल रहा है मुकाबला और अभी इस मैच में बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि असम राइफल फोर्स की टीम है और फोर्स की टीम जल्दी से हार मानती नहीं है। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है देहरादून के पेवेलियन खेल मैदान में और ऐसा लग रहा था कि असम राइफल का थोड़ा सा एडवांटेज बताया जा रहा था यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन फ़िलहाल जब खेल शुरू हुआ तो शुरुआत में ज़रूर असम राइफल की टीम ने कोशिश की ज़्यादा, लेकिन जवाबी हमले में गोल किया गढ़वाल हीरोज़ ने। तो गढ़वाल हीरोज़ की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। यहाँ पे गेंद को बढ़ाया गया है, निकाला गया है गेंद को और अच्छा वहाँ पे ड्रिबलिंग गेंद जा रही है यहाँ पे गोल लाइन से बाहर। तो रेफरी का शायद डिसीजन आया है फ्लैग किक और ये लगातार दबाव बनता हुआ इस समय असम राइफल के ऊपर। गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली की एक सबसे पुरानी क्लब टीम जो सभी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करती है और बहुत लंबे समय से फुटबॉल खेलती रही है। तो गढ़वाल हीरोज़ के जो ये टीम है जो खेल रही है आज, जो 1-0 से आगे है, इसमें काफ़ी कम उम्र के खिलाड़ियों को मौका दिया है मैनेजमेंट ने और अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। और ये फ्लैग किक मिला है, बाएं पैर से ये फ्लैग किक लिया जाएगा। तो दबाव थोड़ा सा बनता हुआ ये गेंद थोड़ा सा आगे बढ़ा दी अपने साथी के लिए और ये लॉब आया है, यहाँ पे खतरा हो सकता है। हेडर की पोजीशन में थे खिलाड़ी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो खतरा जो मंडरा रहा था वो थोड़ा दूर हो गया है। अब थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे डिफेंस लाइन के खिलाड़ी। तो अच्छा चल रहा है मैच देहरादून के पेवेलियन मैदान में, दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और इस मैच के परिणाम से फैसला होगा कि 7 तारीख को कौन सी टीम हिमाचल एफसी के खिलाफ फाइनल खेलेगी। हालांकि इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए भी मैच रखा गया है जो कल खेला जाएगा 2 बजे। तो बढ़िया टूर्नामेंट है ये, ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, द हिमालयन कप। और इस पेवेलियन मैदान में, ये ऐतिहासिक पेवेलियन मैदान है, जैसे हम आपको बार बार बताते ही रहते हैं, इस मैदान में बहुत बड़े टूर्नामेंट्स पहले भी होते आए हैं। डूरंड कप, फेडरेशन कप, ईस्ट बंगाल मोहन बागान जैसी टीमें यहाँ खेल चुकी है। आप खिलाड़ी को देखिए, आप 18 नंबर की जर्सी में बहुत टीनेजर खिलाड़ी हैं और अच्छा भरोसा जो दिखाया है कोच ने इस टीम पर, उस पर सही फैसला साबित कर दिया है इन खिलाड़ियों ने। 1-0 की लीड ले ली है। असम राइफल को मजबूत टीम माना जा रहा था और आज जब दूसरे सेमीफाइनल मैच की चर्चा चल रही थी तो जो भी फुटबॉल के यहाँ पे एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे थे कि असम राइफल को एडवांटेज हो सकता है इसमें क्योंकि ये टीम यंग है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 37 मिनट का खेल हो चुका है, 1-0 से आगे चल रही है और ये गेंद को रखा गया किक के लिए। फिर किक लेने आ रहे हैं खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज़ के और ये पेनल्टी बॉक्स के ऊपर लाया है लॉब, लेकिन वहाँ पर डिफेंडर ने गेंद को अभी थोड़ा सा दूर किया है, रिलीज़ कर दिया, खतरे के क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो अच्छा हमला बना रही है टीम, अच्छा मैच चल रहा है। 38 मिनट का खेल हुआ है। तो पहले हाफ का जो खेल होता है 45 मिनट का, उसमें केवल 7 या 8 मिनट अगर इंजरी टाइम भी जोड़ दे तो मुश्किल से 9 या 10 मिनट का खेल बाकी है। अगर 1-0 की लीड के साथ पहले हाफ को ख़त्म करती है गढ़वाल हीरोज़ तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाएगा उनके लिए, क्योंकि मजबूत टीम असम राइफल जिन्होंने CRPF को हराया था क्वार्टर फाइनल में, अब सेमीफाइनल में उनको दावेदार माना जा रहा था। लेकिन जो मैच इस समय चल रहा है, इस मैच को देखकर अभी कह नहीं सकते कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि 1-0 की लीड ज़्यादा बड़ी नहीं मानी जाती फुटबॉल में। और फिलहाल ये है कि लाभ की स्थिति में है
बढ़िया गेंद बढ़ाई है। 3 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी बाएं छोर से आएंगे गेंद को लेकर और यहाँ से क्रॉस डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा पास दिया उन्होंने और अब जाकर ये आया है किक, लेकिन बहुत कमज़ोर था ये। और इस तरह का किक अगर लगाएंगे स्ट्राइकर तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है और इस समय जो बॉल पोजीशन है उस पर नियंत्रण ज़्यादा गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली का हो गया। जब मैच शुरू हुआ था तो मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि डोमिनेट कर रही है टीम असम राइफल, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो गढ़वाल हीरोज़ की जो फॉरवर्ड लाइन है उन्होंने अच्छा नियंत्रण रख लिया है गेंद पर और स्कोर भी कर लिया है। तो थोड़ा सा लाभ की स्थिति में कह सकते हैं हम इसे। हालांकि फुटबॉल में कभी भी गोल हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते रिजल्ट को लेकर अभी, क्योंकि बहुत समय बाकी है। बाएं छोर से पेनल्टी बॉक्स के बाहर से खिलाड़ी आए हैं, वहाँ पे 4 डिफेंडर हैं। अच्छा मौका है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं गोल पोस्ट पर और ये मौका बन सकता है। निश्चित तौर पर डिफेंडर ने स्लाइडिंग क्लियरेंस किया, अभी भी खतरे के क्षेत्र में गेंद है। पेनल्टी बॉक्स के दूर से प्रयास और ये अच्छा कलेक्शन गोलकीपर का। तो बढ़िया रोमांचक फुटबॉल और थोड़ा सा गोल नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर हासिल किया होगा यहाँ पर असम राइफल ने, क्योंकि एक गोल खाने के बाद थोड़ा सा दबाव में नज़र आ रही थी टीम और इस अच्छे मूव के बाद अब थोड़ा सा एग्रेसिव फुटबॉल खेलेगी असम राइफल। वो जानते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस। ये अच्छा देखिए गोलकीपर ने किस तरह साफ कलेक्शन किया और गोल ग्राउंडर था बॉल, थोड़ा सा भी किसी और का इसमें पैर लगता तो गोल हो सकता था। थोड़ा सा खिलाड़ी इंजर्ड है वहाँ पे ऐसा लगता है। और बढ़िया मैच चल रहा है देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में। दूसरा सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं और ये मैच खेला जा रहा है गढ़वाल हीरोज़ और असम राइफल के बीच। तो गढ़वाल हीरोज़ की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है इस हिसाब से। अगर हम स्कोर लाइन को देखें 1-0 की लीड असम राइफल जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। जो यंग लड़कों की टीम है गढ़वाल हीरोज़, विवेक रावत काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और उन्होंने यही कहा अपने इंटरव्यू में कि प्रेशर होता है सेमीफाइनल में, लेकिन कोच का काम यही है कि लड़कों पर प्रेशर ना आने दिया जाए। तो अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छी रणनीति के तहत टीम को उतारा है और अच्छा कर रही है टीम गढ़वाल हीरोज़। गढ़वाल हीरोज़ काफ़ी बड़ा नाम है दिल्ली में, फुटबॉल की बड़ी टीम है, बड़ा क्लब है और सारे बड़े टूर्नामेंट खेलती है। इस समय दाहिने छोर से एक बार फिर गढ़वाल हीरोज़ के खिलाड़ी जा रहे हैं और ये 7 नंबर की जर्सी। अच्छा क्रॉस आया है, यहाँ पे कोई खिलाड़ी इसको रिसीव करेगा तो मौका बन सकता है, लेकिन डिफेंडर चौकन्ने थे। डिफेंडर ने जल्दी गेंद को रिलीज़ कर दिया और गेंद चली गई है टच लाइन से बाहर। तो रोमांचक चल रहा है मैच गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली और असम राइफल के बीच। लाइव देख रहे हैं मैच आप देहरादून के पेवेलियन मैदान से। अच्छा मौसम है, खुशगवार खेलने के लिए, फुटबॉल देखने के लिए। तो फिलहाल 1-0 की लीड है गढ़वाल हीरोज़ के पास। मध्य रेखा के ओर आ रही है गेंद, बढ़िया चल रहा मैच। They're inching closer to half time now, and Garwal Heroes almost creating another chance and doubling their lead, but it wasn't to be. Neeraj now getting more involved on that right hand side, and Assam Rifles not really creating anything apart from that long distance shot, which was nicely collected by Lionel. And we would like to thank our sponsors here at the Himalayan Cup, because it has been a sensational tournament. Now, as we move into the final 2 days, we'd like to thank ONGC, Indian Oil, Oho Radio, Mittal TMT Bars, Gale India, MSDC, and Corbett FC for all their support in the Himalayan Cup. Third place match tomorrow and the finals on Monday. Both of them will be crackers to watch, especially the all-important final, where we already have our first side, Himachal FC, who must be watching this ardently to see who they face. As of now, it could be the Garwal Heroes. And also, like the teams were participating, we have also numbers watching at home, apart from the ones watching in the stadium. You can catch all the action live on the Parallel Sports channel, a live streaming platform where a lot of live sport is brought to you throughout the year from different places in and around India and also abroad. Offside called on that occasion, with the long ball played towards the box.
and also being telecasted on the Corbett FC Facebook page and the YouTube channel. All the action from the Himalayan Cup coming to you live today, tomorrow, and day after as well. So stay tuned to the Parallel Sports YouTube channel, Corbett FC Facebook page, and YouTube channel as well. 1 minute to go in this first half of the semi-final, and you have to say that the better team is in the lead so far. Another long ball played, but it's not really working for the Assam Rifles. More of a touch team, and there is a big gap between the defenders and the attackers at midfield is having too much of ground to cover, and that makes it really tough, even though their strength is that midfield portion. Perhaps they need someone like a Kipjen to come on, as we see 2 minutes of added time at the end of this first half. This time the ball has been put in, and this could be the equalizer, and David Chala had the ball on a platter, but he could not steer it towards that right hand corner he was looking for. What a delightful ball to find him. He was onside, and all he had to do was hit the frame of the goal, and it was 1-1. I said the strength is the midfield, and how about that for a ball from Kongsit? And David will be ruining that missed opportunity. There he is, looking quite disappointed, as he should be. Is that the chance that the Assam Rifles will be regretting later on? Especially going into half time, if they could have got the equalizer, it would have been a morale booster, momentum switcher as well. But now it's only just a missed opportunity. Can they create another one? Not this time round. So with that miss, it looks like the Garwal Heroes from Delhi will be going into half-time with a 1-0 lead, courtesy a strike from Richej Kharvani, who also scored in yesterday's quarterfinal. That was a tap-in. Today was a superbly taken goal. And referee Rohit looks at his clock and decides that it's time for a break. So at half time, the Garwal Heroes are halfway through to the final. What will Vivek Rawat tell his side? We will find out in the second half whether the Assam Rifles can stage a comeback. At half time, it's 1 goal to the good for the Garwal Heroes.
नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। दूसरे हाफ का खेल अब शुरू होने वाला है। तो पहले हाफ की समाप्ति पे 1-0 के साथ आगे रही गढ़वाल हीरोज़ की टीम। अब दूसरे हाफ का खेल शुरू हो रहा है। टीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है गढ़वाल हीरोज़ दिल्ली। 1-0 की लीड ले रखी है इन्होंने और एक सर्किल बनाकर अपनी स्ट्रेटजी को फिर पुख्ता करेंगे। और देखने वाली बात यही है कि अब जो 45 मिनट का दूसरा हाफ होने वाला है, क्या इसमें असम राइफल की टीम इस गोल को उतार पाएगी। और दर्शक काफ़ी आए हैं आज, तो मैच अच्छा है, रोमांचकारी है। और गढ़वाल हीरोज़ की जो टीम है, जो यंग टीम है, एक यंग लड़कों की टीम है, उन्होंने पहले हाफ में एक गोल करके लीड ले ली है। और आप मैच को देख रहे हैं लाइव। तो अगर आप इस मैच को देखते रहना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता के फुटबॉल का जो जुनून है देहरादून के पेवेलियन मैदान में, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं लाइव। पैरेलल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। इसके अलावा कॉर्बेट एफसी का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आप लाइव देख सकते हैं। और द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का है और इसमें देश की चुनिंदा बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गया है और दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ है तो 1-0 की लीड पर ख़त्म हुआ था पहला हाफ। गढ़वाल हीरोज़ का पलड़ा भी भारी है, 1-0 से आगे है। और ये जो टूर्नामेंट है तो हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, स्पॉन्सर्ड बाय ओएनजीसी, मित्तल, टीएमटी बार, इंडियन ऑयल, गेल, ओहो रेडियो और कॉर्बेट एफसी, एनएसडीसी, वेक्टर स्पोर्ट्स। बहुत अच्छा ये संयोग है कि बहुत अच्छा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर अवेलेबल है और बढ़िया मैच चल रहा है लाइव। और आप लाइव देख सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है मैच। तो पैरेलल स्पोर्ट्स के अलावा आप इसे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं कॉर्बेट एफसी के, और यूट्यूब चैनल कॉर्बेट एफसी का जो है उस पर भी आप देख सकते हैं। तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इन चैनल को। पैरेलल स्पोर्ट्स है, कॉर्बेट एफसी का यूट्यूब चैनल है। और ये दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गया है तो गेंद पर नियंत्रण है असम राइफल का। 1-0 की लीड है जरूर यहाँ पर गढ़वाल हीरोज़ के पास। लेकिन अभी जो दूसरे हाफ का खेल होने वाला है, यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा जरूर होगा फुटबॉल में जो हम सब देखना चाहते हैं, आप सब देखना चाहते हैं, जिसके लिए फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में इतना फेमस है। और अब एक बार फिर हमला कर रही है टीम गढ़वाल हीरोज़ की। तो आज जब मैच शुरू हुआ था तो शुरुआती 4-5 मिनटों में जब खेल शुरू हुआ था तो असम राइफल ने डोमिनेट किया था और गेंद पर उनका पोजीशन अच्छा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गढ़वाल हीरोज़ की टीम ने मिडफील्ड से गेंद को आगे बढ़ाना शुरू किया और लगातार दबाव बना दिया असम राइफल पर और फलस्वरूप एक गोल भी मिल गया उनको। तो 1-0 से लीड ले रखी है जरूर। लेकिन बाकी जो खेल का अभी समय है, बहुत बाकी है। मैच का रिजल्ट क्या होगा वो तो रेफरी की आखिरी विसिल बजेगी तभी मालूम चलेगा। फिलहाल खेल जारी है, अच्छा मैच चल रहा है। थ्रो इन लेने आए हैं खिलाड़ी ध्रुव शर्मा जिन्होंने गोल किया था और थ्रो इन के बाद गेंद को गोल लाइन के करीब से अंदर लेकर आए खिलाड़ी। तो अब गेंद को खतरे के क्षेत्र से दूर कर दिया है तो गेंद पर एक बार फिर गढ़वाल हीरोज़ के खिलाड़ियों ने आज अच्छा दमखम दिखाया है। असम राइफल मजबूत टीम मानी जाती है, फोर्स की टीम है और आर्मी की जो टीमें होती हैं अपने दमखम के लिए, स्टेमिना के लिए जानी जाती हैं। तो उनका जो डिफेंस होता है उसको भेदना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आज गढ़वाल हीरोज़ के यंग बॉयज़ ने ये करके दिखा दिया है पहले हाफ में। और अब देखना है दूसरे हाफ में। अब थोड़ा सा जो कोच हैं थांग, उन्होंने रणनीति और ये कोशिश शुरू हो गई है। असम राइफल के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को ड्रिबल कर लिया उन्होंने 16 नंबर की जर्सी में। अच्छा क्रॉस आया है, खतरा हो सकता है यहाँ पे। ओहो, व्हाट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यहाँ पे। नहीं तो ये दूसरे हाफ के शुरुआत में ही गोल हो जाता है। रिप्ले में देखिए आप कैसे हुआ ये। और ये बहुत अच्छा मौका मिल गया था लेकिन इसको भुना नहीं पाई टीम। और देख सकते हैं आप ये मौका निकल गया हाथ से असम राइफल के। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर हासिल किया होगा इस टीम ने पहले 2 मिनट में ही। अब जो हमला हुआ है, शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी पहले हाफ में। पहले हाफ की शुरुआत में भी असम राइफल ने बिल्कुल एग्रेसिव फुटबॉल का मुजाहरा किया था और टीम आक्रमण पे उतर आई थी। लेकिन 10-15 मिनट हो जाने के बाद पहले हाफ में अचानक से गढ़वाल हीरोज़ ने पोजीशन ले लिया और गोल भी कर लिया। देखते हैं इस हाफ में क्या कुछ हो सकता है, अभी काफ़ी समय बाकी है। तो दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ है। सभी का स्वागत है पेवेलियन खेल मैदान से। हम दिखा रहे हैं आपको दूसरा सेमीफाइनल, ये मैच खेला जा रहा है गढ़वाल हीरोज़ और असम राइफल के बीच। और इस प्रतियोगिता के मैच और हाईलाइट्स आप देख सकते हैं पैरेलल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, कॉर्बेट एफसी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल खेल जारी है, हलचल हो रही है, थोड़ा सा दबाव बन रहा है, तो बढ़िया मैच चल रहा है। Great chances for Assam Rifles either end of half time, but they haven't taken them, and now Garwal Heroes will be wanting to double their lead. Dhruv takes a high corner, it could have dropped to absolutely anyone there. Luckily for Assam Rifles, it dropped to one of their players. Now it's been cleared away, and that is a very good ball towards Rabha.
Doesn't have too much support though. Looks for the ball back towards Roger. Will he get there? No, he won't. A good piece of shielding there from K. Lal. As Lionel came up, and what a save by Lionel a couple of minutes ago of that shot from Roger. Should have scored. Could be a more open game this second half because the Rifles need to get back into this one. There is Dhruv cutting inside towards the left foot. Can't play it to any of his teammates. Lal looking for the one towards Jaideep. Clear away. He will be wary of this scoreline. Vivek Rawat knows all too well that this is not a safe score. No score is safe in this day and age in football. Here is Jaideep taking a shot which has landed up towards the other winger. Neeraj puts it back inside. Cleared very high but not too far. Not good defending so far from the Assam Rifles. You need to put your boot through a few of those ones. Gagan Kalyan was the one. Oh, and that's definitely going to be a foul from Lal on Rabha. These two going at it quite a bit. First the pull from Rabha, and then Lal said, "You're not going anywhere, are you?" Looks like Lal will go into the referee's book. Ball played into the center by Arjun. Rabha wins it back, and that ball was always rising. Shot was never on from that kind of a distance from David. He will be thinking about that missed header which he had in the first half, but he's got to put it behind him. We saw Ajay in the first semi-final missing a penalty, putting that behind him, and then scoring a fabulous goal. We're enjoying the action here at the Pavilion ground, and I'm sure you are as well. You can catch all the action on the Parallel Sports YouTube channel, and also Corbett FC Facebook page and YouTube channel. Here's Hokip. He's had a very good game, stepping in to the starting lineup in place of his fellow midfielder Kipjen, who was also superb yesterday versus CRPF. Hokip was available, then why not play him maybe yesterday for a while? No substitutions made from Assam Rifles yesterday. The whole of the 120 minutes. Here's Kongsit. Poor ball from him. Rifles are still in this one. Borwa takes it forward, decides to put the ball in with his right foot. It's a good delivery. Sukraj does well, and it's a foul on him in the meantime. Not too much in that one for sure. Now Assam Rifles, after getting those chances, know they can create them. It's just about taking it. They couldn't do that yesterday. Today is the day. And if they want to make it to the final, they can't rely on not scoring. They have to score now.
Can't be like yesterday where they took it to penalties and then wanted to go for it. Here is Johnny, but it just never fell to him. Yeah, too many defenders. Dhruv there making the block once and then twice. Good try from Roger, who's trying to make amends for that miss in front of the goal mouth. There is David. Also Mr. Header. Assam Rifles looking good. Good ball into the box. But Lionel will take some beating. There's David just struggling slightly. Nice place to have your cup of tea and watch some good football. 10 minutes into the second half. Garwal Heroes have been on the back foot, although they have the lead. Kongsit, another good game from him. Hokip has done well. Plays it to David. Always involved. Puts another ball inside. Great clearance from inside the box. In fact, it could have resulted in a pass, and that is naughty from Borwa. And I think he will go into the referee's book because of that unnecessary elbow to the face. Let's take another look at it. Oh yes, not required. So now Kelal from the Heroes and Borwa from the Rifles, both in the referee's book. And that's what Sukraj is mentioning. Confirmation of the yellow card for Borwa. Gaurav Rawat will take the free kick, probably aim for the penalty area. Good delivery from him. The skipper was there, and that could have been a chance for Neeraj Bhandari. Yes, he was there, but quite tough to get the ball on target with the head from so far. Offside called. Rifles now. Once again with David on the left hand side. Crosses it inside. Not the best one, and now counter-attacking opportunity. So much of space in the midfield for the Heroes. Here is Dhruv. His close control is very good. Plays it nicely towards the left-hand side for Diendo. Quick footwork from him, but again the end product not the best. And now, as it has opened up again, the Rifles have a chance to play it to David on the left-hand side. Poor delivery once again. Another loose ball with nothing to really chase at. In fact, it probably was going out for a corner, and that's why it has been just put out for a throw. Jaydeep will take it. Hasn't been as good as he was yesterday. Not too involved today.
tougher opposition, of course. All eyes on this semi-final number 2. And there are Doon in the pavilion ground. Viraj with the long throw. Nicely headed away from danger for the time being by Borua. Needs to be careful, he's on a yellow. Nirmal will take the corner. Can the Rifles keep themselves in the game, not concede another? The longer they do, they still have that chance. But they need to score. That's the most important thing. Brilliant defending there from Sukraj, not giving an inch to the attacker. बहुत अच्छा मैच चल रहा है और दूसरे हाफ के खेल में अगर आप देखें तो लगभग 50-50 का मामला है और एक अच्छा मौका मिला था यहाँ पर ज़रूर असम राइफल को, लेकिन बुना नहीं पाई। और जैसा खेलों में अक्सर कहा जाता है, कभी कभी कह देते हैं खिलाड़ी या कप्तान कि आज दिन नहीं था, तो आज अभी तक जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गढ़वाल हीरोज़ के फेवर में अच्छा हो रहा है। अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन फ़िलहाल 1-0 की जो लीड बना के रखी हुई है उसको बना के ही रखा है गढ़वाल हीरोज़ ने और समय धीरे धीरे बीत रहा है। अभी तो 15 मिनट का खेल हो चुका है, 30 मिनट का खेल अभी और होना है। तो अब देखने वाली बात यही है, मैच अच्छा चल रहा है। देहरादून के पेवेलियन खेल मैदान से आपको दिखा रहे हैं मैच और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है मैच का, तो आप देख सकते हैं पैरेलल स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो प्रतियोगिता है पूरी कॉर्बेट एफसी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और पैरेलल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल बढ़िया फुटबॉल का टेलीकास्ट चल रहा है। आपको आनंद आ रहा होगा इस मैच में। अच्छी फुटबॉल खेली जा रही दोनों टीमों के द्वारा और अभी 7 तारीख तक यहाँ पर जारी रहेगा टेलीकास्ट का सिलसिला। तो द हिमालयन कप का ये मैच देख रहे हैं, जद्दोजहद है गेंद पर नियंत्रण को लेकर, दबाव दोनों ही टीमों के ऊपर है क्योंकि बहुत बड़ा मैच है ये और इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी और किसी भी बड़ी प्रतियोगिता का फाइनल खेलना अपने आप में एक प्राउड फील करने जैसा होता है। तो इसीलिए दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही हैं, पूरा एफर्ट लगा रही हैं और अभी तक जो स्कोर लाइन है वो गढ़वाल हीरोज़ के ही फेवर में है। थोड़ा गिरे हैं वहाँ पे खिलाड़ी और ऐसा लगता है रेफरी ने भी इसको सीरियसली लिया है टैकल को, जिस तरह से गिराया गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर से अगर फ्री किक मिलता है तो ये फ्री किक अच्छा रहेगा देखने में और देखते हैं किस तरह से फ्री किक को लिया जाता है। और बहुत सारे रोल हो गए वहाँ पे, खिलाड़ी तेज़ी से गिरे थे और जब खिलाड़ी तेज़ी से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हल्का सा टैकल भी अगर होता है तो गिर जाते हैं खिलाड़ी। फिलहाल 15 मिनट का खेल हुआ है। तो ये जो हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्ड हैं ONGC, मित्तल TMT बार, इंडियन ऑयल, ओहो रेडियो, गेल, कॉर्बेट एफसी, NSDC, वेक्टर स्पोर्ट्स। तो ये स्पॉन्सर्ड है जो इस बड़े प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं जिन्होंने इसको हेल्प की है और लाइव टेलीकास्ट अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर। पैरेलल स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं, कॉर्बेट एफसी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल ये खिलाड़ी इंजर्ड हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं काफ़ी टफ होते हैं फिजिकली और इस समय आप देख सकते हैं विवेक रावत हैं ये कोच गढ़वाल हीरोज़ के और उनके एक खिलाड़ी इंजर्ड हैं। तो थोड़ा अगर मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन अच्छी टीम है, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं गढ़वाल हीरोज़ के। फिलहाल 17 मिनट का खेल हुआ है दूसरे हाफ का और कुल 62 मिनट का खेल हो गया है। 1-0 की जो लीड है उसको कायम रखा है गढ़वाल हीरोज़ ने। पीले रंग की जर्सी में ये खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं 26 नंबर की जर्सी में। तो देहरादून का पेवेलियन मैदान गुलजार है फुटबॉल खिलाड़ियों से और अब यहाँ पर फ्री किक लिया जाना है तो ये डेंजर एरिया कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ से एक एंगुलर शॉट लगाया जा सकता है और ज़्यादा दूर नहीं है पेनल्टी बॉक्स से। तो गोलकीपर एकदम से तैयार हैं और 2 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। देखने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि 2 खिलाड़ी रहते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किक कौन लेगा। 2 खिलाड़ियों की वाल भी बनी हुई है और ये 8 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने किक लिया, घूमता हुआ किक आया है लेकिन कमज़ोर किक था ये, क्योंकि डिफेंडर ने तुरंत गेंद को रिलीज़ कर दिया। अभी भी गेंद को वापस भेजा गया है पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन गेंद जा रही है गोल लाइन से बाहर हार्मलेसली। तो फिलहाल गेंद को रखा जाएगा गोल किक के लिए। देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रहा है दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और एक टीम जो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है वो है हिमाचल एफसी। दूसरी जो टीम फाइनल खेलेगी उसका फैसला होगा इस मैच से, जिसमें 2 टीमें खेल रही हैं और ये जो टीमें हैं नेवी ब्लू कलर में है आसाम राइफल और येलो कलर की जर्सी में है टीम गढ़वाल
हीरोज जो 1-0 की लीड ले चुकी है। तो अच्छी टीम है, अच्छी मजबूत टीम तैयार की है गढ़वाल हीरोज़ ने और यंग लड़कों को मौका दिया है। और जैसा लगातार उनके कोच ने कहा है कि यही टीम आगे गढ़वाल हीरोज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब इस खिलाड़ी को देखिए आप, काफ़ी कम उम्र के हैं और देखिए रिप्ले में किस तरह से टैकल कर रहे थे और किस तरह से पुश किया। तो ये वाकई फाउल है, तो फाउल लिया गया है। फाउल के बाद फ्री किक लेगी अब टीम असम राइफल। 1-0 की लीड है गढ़वाल हीरोज़ के पास। और ये हरी जर्सी में जो दिखाई दे रहे हैं ये कोच हैं गढ़वाल हीरोज़ के। किक लेने के लिए आए हैं खिलाड़ी। गेंद को रख दिया गया है, मध्य रेखा से थोड़ा पहले ही किक लेंगे खिलाड़ी असम राइफल के। अच्छा किक आया है ये बॉक्स के अंदर, लेकिन वहाँ पर डिफेंस लाइन ने हेडर से गेंद को रिलीज़ कर दिया है और अब खतरे के क्षेत्र से गेंद दूर चली गई है। तो क्या काउंटर अटैक करेगी टीम गढ़वाल हीरोज़? बहुत तेज तर्रार फॉरवर्ड लाइन है और आज हिमाचल एफसी के स्ट्राइकरों ने भी प्रभावित किया था। और अभी बाएं फ्लैंक से गेंद 9 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास है और इस गेंद को क्रॉस डालने का प्रयास, अंदर आ गए हैं वो और ये बाहर से कोशिश, लेकिन ये चिप किया था अपने साथी के लिए, रिसीव नहीं कर पाए। तो ये अच्छा मूव बन रहा था लेकिन इसका लाभ नहीं मिला गढ़वाल हीरोज़ को। और अब काउंटर अटैक कर रही है टीम असम राइफल ने भी ब्लू कलर में मध्य रेखा को पार किया है। उन्होंने गेंद को बढ़ाया जरूर गया था लेकिन डिफेंडर चौकन ने और हर खिलाड़ी को मार किया हुआ है यहाँ पर गढ़वाल हीरोज़ ने। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे हैं इस बड़े मुकाबले में और ये बहुत बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज मैच चल रहा है। और देखने वाली बात है कि जो स्कोर लाइन है 1-0, क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? अभी तो ये भविष्य के गर्त में है लेकिन फिलहाल मैच जारी है, अच्छा मैच चल रहा है, रोमांचक। गढ़वाल हीरोज़ वर्सेस असम राइफल। 1-0 की लीड जो शुरुआत में बन गई थी वो लीड कायम है। और अब देखने वाली बात है कि स्कोर लाइन में कुछ तब्दीली होगी या यही स्कोर लाइन पर मैच खत्म होगा, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी। फिलहाल विवेक रावत संतुष्ट तो होंगे लेकिन हर कोच यही चाहता है कि एक ऐसी लीड हो जिसको लेकर आखिरी तक चला जाए। तो 1-0 की लीड अच्छी है। बड़े मुकाबलों में बहुत ज़्यादा गोल होते भी नहीं हैं, हालांकि सुबह जो मैच हुआ उसमें 3 गोल किए हिमाचल एफसी ने। एक बार फिर गेंद को बढ़ाया गया है बाएं फ्लैंक पर, क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी? और रोक लिया उन्होंने अंदर, लेकिन गेंद को क्लियर करने के लिए डिफेंडर वहाँ पे मौजूद है, आज़ादी देंगे नहीं उनको किक लेने की। अच्छा पास आया है, बहुत बढ़िया, अच्छा तालमेल, अच्छा मैन टू मैन पास के जरिए एक प्लान मूव बनाने की तैयारी। और ये क्रॉस आया है लेकिन ये क्रॉस इतना अच्छा नहीं था, कमज़ोर क्रॉस था, ये ऊंचा था और थोड़ा अगर उसकी हाइट कम रखते तो वहाँ पर अटैम्प्ट किया जा सकता था स्कोर के लिए। अब काउंटर अटैक बनता हुआ, काउंटर अटैक असम राइफल के खिलाड़ी बाएं छोर से आगे बढ़े, गेंद को मध्य रेखा को पार कर लिया है उन्होंने। गेंद सरका दी गई है बाएं फ्लैंक पर खिलाड़ी मौजूद हैं असम राइफल के। और अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी धीरे धीरे गढ़वाल हीरोज़ के हाथ में आ गए हैं और अब दबाव बनाने की रणनीति, लेकिन आसानी से मौका देगी नहीं गढ़वाल हीरोज़ की डिफेंस लाइन। और अच्छा मूव बन रहा है, ये बाएं छोर से ये क्रॉस आया है, सेंटर किया गया लेकिन इतना अच्छा नहीं था, ये थोड़ा माइनस खिलाना चाहिए था और गेंद गोल लाइन से बाहर चलेगी तो राहत महसूस करते हैं डिफेंडर। अगर इस तरह का किक गोल लाइन से बाहर चला जाए या बार के ऊपर से चला जाए तो थोड़ा जो प्रेशर बना होता है डिफेंडर पे वो रिलीज हो जाता है। फिलहाल 1-0 की लीड कायम है। देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रही है ये प्रतियोगिता, ऑल इंडिया फुटबॉल द हिमालयन कप, और इसका ये दूसरा सेमीफाइनल। जोरदार, रोमांचक, लाजवाब फुटबॉल का मुजाहरा और सब आप लोग आनंद ले रहे होंगे इस मैच का। तो अच्छा मैच चल रहा है और ये एक हाई लेवल फुटबॉल खेली जा रही है। अब जैसे जैसे मैच टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, सेमीफाइनल चल रहे हैं, तो पहला मैच भी बहुत अच्छा था, बहुत तेज तर्रार स्ट्राइकर थे हिमाचल के जिन्होंने 3, और ये लॉ बहुत दूर से प्रयास, बार के ऊपर से चली गई गेंद। तो 1-0 की जो लीड है वो कायम है गढ़वाल हीरोज़ की। 67 मिनट का समय हो गया है और अगर इसी समय में जो समय निर्धारित होता है 90 मिनट का खत्म होता है, स्कोर लाइन यही रहती है, तो भी गढ़वाल हीरोज़ को एडवांटेज है। मध्य रेखा के ऊपर आई है गेंद, 7 नंबर की जर्सी पहने ध्रुव शर्मा जिन्होंने गोल किया था, उन्होंने गेंद बढ़ाई अपने साथी के लिए। दाएं छोर से एक बार फिर गढ़वाल हीरोज़ का अटैक बनता हुआ, बहुत अच्छा पास दिया है, 1 टच पास। और अब ये गेंद पर नियंत्रण रखना चाहते हैं लेकिन गिरे हैं, तो क्या इसको सीरियसली लेंगे रेफरी? और ये अच्छा है कि इस आज सुबह भी जो मैच हुआ था, जो ऑफिशियल हैं रेफरी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे फाउल पे तुरंत किक दिया है। यहाँ पर भी गिरे थे खिलाड़ी और थोड़ा सा पीछे से टैकल जब करते हैं खिलाड़ी तो वहाँ पर फाउल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार फिर अब ये बहुत अच्छा एक मौका मिल गया है गढ़वाल हीरोज़ को, क्योंकि जो मैच का फ्लो था, जिस फ्लो को कायम रखना चाहती है असम राइफल तेज, वो अब कम हो गया है क्योंकि थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है। 30 सेकंड का गेंद को रखा गया है फ्री किक के लिए, हालांकि फ्री किक तो अपने हिसाब से लेना है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप कहाँ से दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल का क्रेज़ है। उत्तराखंड में फुटबॉल पसंद किया जाता है, वैसे तो पूरी वर्ल्ड में ही फुटबॉल सबसे फेमस गेम है। ये लॉब आया है, खतरा हो सकता है यहाँ पे, और ये खिलाड़ी इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए। गोलकीपर भी मिस कर चुके थे गेंद को और वहाँ पे ध्रुव शर्मा भी मिस कर गए। नहीं तो आप देखिए रिप्ले में, देखिए आप कितना शानदार किक आया था और यहाँ पर ज़रूर हलचल हो गई थी और लग रहा था कि यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। देखिए कितना करीबी मामला ये, और भाग्य ने थोड़ा साथ दिया यहाँ पे।
असम राइफल का, नहीं तो ये निश्चित गोल पोस्ट के बिल्कुल 2 फीट पहले ही गेंद गिरी थी। गोलकीपर भी बीट हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर इतना स्पेस नहीं था कि जो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थे ध्रुव शर्मा वो हेडर या पैर से गेंद को जाल में डालते। फिलहाल एक बार फिर गेंद आ गई है गढ़वाल हीरोज के पास। गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी काफ़ी तेज़ तर्रार, और लगभग ये टीम उसी तरह नज़र आ रही है जिस तरह हिमाचल की टीम खेल रही थी आज। हिमाचल की टीम ने आज बहुत तेज़ आक्रमण किए और उत्तराखंड की टीम को कभी भी संभलने का मौका नहीं दिया। उत्तराखंड की टीम को 3-0 से पराजित कर फाइनल में पहुंची है हिमाचल की टीम, और अब ये दूसरी टीम कौन सी होगी जो फाइनल खेलेगी 7 तारीख को, उसका फैसला इस मैच से होगा। मैच चल रहा है और अब कोशिश कर रही है असम राइफल की टीम, लेकिन कोशिश करने से नहीं होगा, उन्हें पूरा ही जोर लगाना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे यहाँ पे असम राइफल को अगर गढ़वाल हीरोज़ को हराना है, क्योंकि एक गोल तो उन्हें बराबरी के लिए चाहिए और एक और गोल चाहिए जीत के लिए अगर गढ़वाल हीरोज़ नहीं करती है गोल। लेकिन मैच अच्छा चल रहा है, रोमांचक मैच है और अच्छा तेज़ फुटबॉल खेली जा रही है और दर्शक इसी तरह की फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे खिलाड़ी ये गिरे हैं गढ़वाल हीरोज़ के और ये सिलसिला फुटबॉल में जारी है। तो ये हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट लाइव आप देख सकते हैं पैरेलल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे और कॉर्बेट एफसी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट की बात करें हम तो ये बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट है, बहुत अच्छी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अंतिम चरण में है, दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। कल 3rd प्लेस के लिए मैच होगा 2 बजे, तो आप बने रहिए इन चैनलों के साथ जिन पर आप देख पाएंगे मैच। फिलहाल गेंद को फ्री किक के लिए रखा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो इस किक को लेंगे। ऐसा लगता है बाएँ 2 खिलाड़ी वहाँ पर हैं इस किक को लेने के लिए, हालांकि काफ़ी दूर से लिया जाना है, किक अपने हाथ से लिया जाना है और ये काफ़ी ऊंचा किक है, बॉक्स के अंदर खतरा हो सकता है, यहाँ पे डेंजर, गोलकीपर ने रोक लिया। तो ये बैक टू बैक सेकंड अटैक हुआ है और निश्चित तौर पर काफ़ी तेज़ तर्रार फुटबॉल खेल रही है गढ़वाल हीरोज़ की टीम और अब काउंटर अटैक बनाने की कोशिश में है असम राइफल। असम राइफल के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़े जरूर हैं, लेकिन डिफेंडर बहुत चौकन्ने हैं, उन्होंने मार्क किया हुआ है एक एक खिलाड़ी को, एक एक खिलाड़ी की हरकत पर नज़र है और यहाँ पर अब गिरे हैं खिलाड़ी असम राइफल के। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फ्री किक मिलेगा और फ्री किक मिलेगा यहाँ पे असम राइफल को, मौका है उनके पास। देखिए रिप्ले में किस तरह से ये किक लिया गया था, काफ़ी ऊंचा लॉब आया था, बैक टू बैक हमला और यहाँ पर भी मौका, कितना नज़दीकी मामला था और अगर वहाँ पे डिफेंडर बैकअप नहीं करते तो मुश्किल हो जाती है यहाँ पर असम राइफल के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये फ्री किक लिया जाना है, बाएं पैर का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है बाएं छोर से ही लिया जा रहा है। अच्छा किक आया है, घूमता हुआ अंदर स्विंग होता हुआ बॉल, खतरा, अभी भी खतरे के क्षेत्र में गेंद है, अटैम्प अच्छा, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा, हाँ गेंद की हाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाए खिलाड़ी और आज थोड़ा सा दबाव भी है असम राइफल के ऊपर, क्योंकि शुरुआत में गोल हो जाने के बाद प्रेशर में टीम, देखिए कैसा रिबाउंडर में डिफ्लेक्ट होने के बाद गेंद गई पीछे, दूर से प्रयास किया गया और ये गेंद बार के ऊपर से निकल गई। तो कॉन्फिडेंस ज़रूर हासिल होता है फॉरवर्ड लाइन को अगर उनका अटैम्प्ट मूव बनता है और गोलकीपर को भी थोड़ा सा दबाव में लाते हैं। तो द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाई ONGC, मित्तल TMT बार, इंडियन ऑयल, ओहो रेडियो, गेल, कॉर्बेट एफसी, NSDC और वेक्टर स्पोर्ट्स, तो स्पॉन्सर की मदद से चल रहा है मैच, अच्छा चल रहा है। So many chances at either end with 18 minutes to go, and it's still anyone's game, you feel. If Assam Rifles just get one goal, then we're all square. Garwal Heroes know that. They're pushing for a second. Again and again. Here is Richage, who did get the first goal. Plays it wide. Neeraj goes for the cross inside. It is a good one. Header finds Dhruv. Richage with a brilliant turn, and then he goes for goal himself. That would have been one of the goals of the tournament. Not like his first one wasn't, but this one could have been even better. That turn was sublime. Oh, you don't get anything better than that, do you? The finish just needed to be better, and it would have been perfect. Now the Rifles on the charge, that should go straight to Lionel. Brilliant touch. Richage has been superb. Look at that for a ball. Was onside. He is bossing this game. .17 minutes to go, and the Rifles absolutely need to get something out of this. That is a mistake. Maybe it can come from here. Not this time round for Abha.
You want to attempt it, should be too much on it, and it is. What we didn't see yesterday from Assam Rifles were substitutes, and still the same today. We know they do have the likes of Kipchen and Devendra who can come on. Don't mind putting Devendra up top. He's so tall, he wins headers. You just put him there and play some long balls. Perhaps something can come of it. Just maybe need something fresh. And Thang Cookie does not seem to think that way. Oh my goodness, this could have been a mess. Just as the ball was played, then Rahul realized it was coming towards him. Disappointing ball once again. Just nothing of real intent from the Assam Rifles so far. Need to be more incisive. 15 minutes to go in this semi-final. Chandra plays a long ball in. It's a good one, but slightly behind Rabha, who was going for the header. Here are the Garwal heroes playing it down the right hand side. A lot of attacks come from Nirmal, trying to beat on pace and isn't able to do so against the quite pacey Gagan. Another chance here, but well defended. Himachal FC already in the finals. Now it's about whether the Assam Rifles will join them or the Garwal heroes. So far, it's the latter. Here's David. Plays a crossfield ball. Looking for Johnny, who hasn't been too involved in the game. Everything going down that left hand side where David is. Want to see Johnny on the ball, running past players. Hit the post yesterday. Has that quality in him. And so far it's that quality strike from Richage which is separating these two sides. Risky from Rahul Fukan. Did it neatly though. Arjun goes for a long ball. Could fall into the path of Johnny, but he's hustled away from it by Abhishek Negi, who does a good job to clear it away. Here's Dhruv. Sukrat Singh with the clearance. Jaideep has a lot of space. He has three teammates alongside him. What a ball that is. This could be a Richage to finish it. He takes it down the keeper and he completes what has been a superb game from him. Richage Khalwani gets a brace, gets number 2, and we may have found finalist number 2 in the Himalayan Cup. And it looks like it's going to be the Garwal heroes. What a ball from Jaideep and what a finish from Richage. Just dribbled past Manichandra Singh like he was in there, and then he celebrates with his coach Vivek Rawat. What a performance by this youngster. Making the run through. Good ball from Jaideep. He was definitely onside, and it was all too easy. Too much of a gap there from the Assam Rifles, and a dribble past the keeper and a goal. See it in its totality. It's a very nice move, and that should be the game for the heroes.
Rifles trying to still get back into this game, and those two chances are the ones which they are going to think about later on. One to Roger, which was like a tap in, although it is a good save by Lionel, and the other the header from David in the first half. Now the Heroes looking to put this game to bed. Jaideep with the chase, but Manichandra Singh should get there before him. I have to say that the Heroes have been the better side today. They continue to do so. Here is Dhruv. Lots of space on the left hand side. Has Richage beyond him. Goes inside. Will we see a shot from distance? Not the first time round. Diengdo plays it wide to Neeraj, who's one step closer perhaps to lifting that trophy for his side. Lal puts the ball in and cleared away by Rahul Fukan. Just holding the ball now, taking control of this game. Lovely ball over the top. Diengdo goes for a ball in. Cleared away comfortably. Can the Rifles somehow get a goal now? This is a chance. It's 3-on-3. David plays the ball to Rabha, and he didn't get enough on it. But well saved by Lionel nonetheless. They will keep coming though, the Rifles. Rahul looks for the ball towards Johnny. He is skillful. There he is. Not enough to beat Abhishek Negi. And it is a time for a substitution. As the number 20, Rohit Gusain, will come on, and he replaces Dhruv Sharma, who has had another standout game in the yellow of the Garwal Heroes. What a player he is. He gets a rest of 10 minutes. Now the Assam Rifles have a chance. Could have taken that first time, decided not to. Rabha himself tries to shoot, and the shot had to come in. First time round, I feel. And a foul called as well from Rahul Fukan. Kelal. Gagan Gaurav Rawat, I beg your pardon, does that really nicely. And now another chance for the Garwal Heroes. Jaideep is there. Will he take it first time? No, he takes it past and plays it. Oh, what a shot that is! What a goal from Jaideep. For a second it looked like it had gone outside, but that is a special goal from a striker who can score from everywhere. He showed us his quality yesterday with the free kick, and this time he does absolutely spectacularly well. What a goal from that kind of an angle. First touch took it away from Arjun. Oh, and at the first post, you didn't expect Manichandra Singh to be beaten, but the keeper thought the ball was going to go across the post, and he just smashed it straight in. And that is game, set, match. If you were ever unsure, Jaideep has provided the surety. And he gets onto the score sheet once again with Rijesh Kharbani. There's David. Gets past, plays it inwards, nicely defended. Touch is too heavy from the Assam Rifles player. 6 minutes to go, and they need 3 goals. It's looking like a very tough task.
तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है मैच और गढ़वाल हीरोज़ की टीम ने बैक टू बैक 2 गोल करके इस हाफ में 3-0 की एक कह सकते हैं कि ऐसी लीड ले ली है जिसको उतारना इतना आसान नहीं है। तो आज का ये मैच भी लगभग सुबह के मैच जैसा ही हो रहा है। सुबह जब मैच खेला गया था पहला सेमीफाइनल, तो हिमाचल एफसी ने भी कुछ इस तरह ही तेज़ तर्रार खेल दिखाया था और आज उसी का दूसरा मैच चल रहा है ये, और इसमें भी लगभग वही स्थिति है। 3-0 से गढ़वाल हीरोज़ की टीम आगे हो गई है और अभी ये 5 मिनट के अंदर बैक टू बैक 2 गोल दाग कर लगभग बैकफुट पर आ गई है असम राइफल की टीम। और मैच शुरू होने से पहले मजबूत टीम माना जा रहा था असम राइफल को, ऐसा माना जा रहा था फोर्स की टीम है। और जो गढ़वाल हीरोज़ की टीम है उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, कम उम्र के लड़के हैं, लेकिन जिस तरह ये 15 साल के एक खिलाड़ी ने गोल मारा है सुखराज सिंह, वाकई लाजवाब, बेहतरीन। और थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है इस समय, डेनियल मेठी अंदर जाएंगे और रोजर सिंह बाहर आएंगे। और अब गढ़वाल हीरोज़ के पास एक लीड ऐसी हो गई है कि लगभग बहुत मुश्किल है, जितना समय बाकी है 85 मिनट का खेल हो चुका है और अगर इंजरी टाइम जोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 8 या 9 मिनट का समय बाकी है। तो क्या अभी एक और गोल देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। मैच बहुत रोमांचक जोरदार चल रहा है और अच्छी फुटबॉल खेली है यहाँ पे गढ़वाल हीरोज़ ने। तो फुटबॉल का जो खेल है वो फॉरवर्ड लाइन का ही होता है, जो स्कोरर होते हैं उनसे ही फुटबॉल को आकर्षक बनाया जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार हमले कर रही है गढ़वाल हीरोज़ की टीम, बहुत अच्छा खेल दिखाया है। और विवेक रावत जो कोच हैं, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया इन लड़कों पे, उन्होंने इसको आज सही साबित करके दिखाया है। तो बहुत अच्छा फॉरवर्ड लाइन है और बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं हाई लेवल की फुटबॉल यहाँ पे खेली जा रही है। तो आपको निश्चित तौर पर आनंद आ रहा होगा। तेज़ तर्रार खेल रही है टीम और गढ़वाल हीरोज़ ने लगभग पहले सेमीफाइनल की पुनरावृत्ति कर दी है। उस सेमीफाइनल में भी हिमाचल एफसी की टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की और अक्सर इतने बड़े मुकाबलों में इतने गोल होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो फॉरवर्ड लाइन है उनका तालमेल गजब का है और जिस तेज़ी के साथ बढ़ते हैं आखिरी समय तक कूल, ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल नंबर 2 मारा था और अब फिर गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसी स्पिरिट से खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़वाल हीरोज़ की टीम इतनी अच्छी लीड लेने के बाद भी समय जाया नहीं कर रही है और वो जब भी मौका मिलता है मुंह बना रही है। तो आज बहुत अच्छा, और लड़कों का खेल, यंग लड़कों का खेल देखकर फुटबॉल ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अगर यंग लड़के निकल कर आते हैं किसी भी टीम से हो तो बाद में वही इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अच्छा मैच, हाई लेवल की फुटबॉल देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रही है और इस मैदान में द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे मैच चल रहे हैं, इस समय लाइव देख रहे हैं आप। ये है टीम गढ़वाल हीरोज़ की जो आज रियल में हीरो बन के उभरे हैं खिलाड़ी। इनके 3-0 की बड़ी लीड ले ली है और असम राइफल के खिलाड़ियों के लिए अब कुछ नहीं बचा इस मैच में सिवाय इसके कि और गोल ना होने दे, क्योंकि 86-87 मिनट का समय हो चुका है। 90 मिनट का खेल होता है और अगर इंजरी टाइम जोड़ भी दिया जाए तो काफ़ी कम समय शेष है। 3-0 की निर्णायक लीड। और मैन ऑफ द मैच के लिए खरबानी का नाम आ रहा है। तो लगभग औपचारिकताएँ रह गई है, समय काफ़ी कम बचा हुआ है। 87 मिनट 32 सेकंड का समय हो चुका है। तो 90 मिनट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट का इंजरी टाइम और होगा। तो अब कह सकते हैं कि इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ है नहीं असम राइफल के लिए। कुछ लास्ट में अगर अच्छा मूव बनाए, एक आध गोल करें तो थोड़ा सा एक मैच समाप्ति के बाद सेटिस्फेक्शन रहता है। और दूसरे हाफ में पहला जो गोल मारा सुखराज सिंह जो यंग है खिलाड़ी, उन्होंने मारा और अच्छा गोल था ये, लाजवाब दर्शनीय गोल, अच्छी स्किल दिखाई उन्होंने। फ़िलहाल मैच जारी है और देहरादून के पेवेलियन मैदान में आज गोलों की बरसात हो गई है और अक्सर दर्शक मैच देखने आते हैं। ऐसे भी मैच हुए कल परसों में जब 120 मिनट तक गोल नहीं हुआ, फील्ड गोल। और सूरज 9 नंबर की जर्सी में जिन्होंने तीसरा गोल मारा। तो कुल मिला के बहुत अच्छी ये लीड हो गई है और बढ़िया मैच है, बढ़िया मैच है। और ये अपने आखिरी दौर में जा रहा है, आखिरी समय में जा रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहे हैं मैच के और मैच का रोमांच बरकरार है। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में दूसरा सेमीफाइनल मैच जो चल रहा है ये लाजवाब है और इसमें गढ़वाल हीरोज़ की टीम ने दमखम दिखाया है। गढ़वाल हीरोज़ के लड़कों ने, ये देखिए आप खिलाड़ी जिन्होंने गोल मारा, नंबर 2 उनके पास गेंद है तो सब्स्टिट्यूट भी किया जा रहा है, लेकिन इसका अब मैच के परिणाम पर ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। गिरे वहाँ पर थोड़ा सा अनइवन है ग्राउंड, लेकिन गेंद छिन गई उनसे और अब गेंद को लेकर असम राइफल के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। मध्य रेखा पर खेल हो रहा है, मध्य रेखा में गेंद है और अब निर्णायक समय चल रहा है और अब आखिरी लम्हे चल रहे हैं इस मैच के। तो हिमाचल एफसी के साथ दूसरी टीम जो फाइनल खेलेगी लगभग उसका तय हो गया है, वो खेलेगी गढ़वाल हीरोज़। तो अब गढ़वाल हीरोज़ की टीम का मुकाबला होगा 7 तारीख को फाइनल में, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और इतने कम समय में इतनी बड़ी लीड को
कम करना आसान नहीं है। तो बहुत अच्छा दूसरा मैच ये देख रहे हैं आप देहरादून के पेविलियन मैदान से। और दूसरा सेमीफाइनल द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। अब लगभग आखिरी मूवमेंट चल रहे हैं, 89 मिनट का समय हो चुका है और अब बस देखने वाली बात है कि कितना इंजरी टाइम मिलता है। मैच का परिणाम तो चेंज होने वाला नहीं है, क्या गोल एक और हो सकता है किधर से, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल अच्छा चल रहा है मैच, 3-0 की निर्णायक बढ़त है गढ़वाल हीरोज़ के पास। और अभी भी गढ़वाल हीरोज़ के खिलाड़ी 14 नंबर की जर्सी पहने अभी भी वो तलाश में है गोल की। तो ये दर्शाता है कि टीम कितनी तैयार है और अभी भी पेनल्टी बॉक्स के बाहर है, खतरे के क्षेत्र में गेंद है। गेंद को रिलीज़ किया गया है, छोटा पास दिया है और अब असम राइफल के खिलाड़ियों ने ले लिया है गेंद को। समय निर्धारित लगभग पूरा होता हुआ और 90 मिनट का समय पूरा हो चुका है। अब इंजरी टाइम में देखते हैं कितना समय मिलता है। तो फिलहाल आप सब देख रहे हैं ये शानदार मैच जिसमें गढ़वाल हीरोज़ की टीम लगभग फाइनल में पहुंच जाएगी, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। 4 मिनट का इंजरी टाइम है, 4 मिनट का इंजरी टाइम। तो अब इंजरी टाइम में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल हम जो दिखा रहे हैं आपको द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल, जिसमें गढ़वाल हीरोज़ की टीम लगभग उसकी जीत तय है क्योंकि 3-0 की बहुत बड़ी लीड है उनके पास। और हिमाचल एफसी ने भी 3-0 से ही पहला सेमीफाइनल मैच जीता था और अब ये टीम भी 3-0 की लीड ले चुकी है। लीड बहुत कम समय बाकी है, इंजरी टाइम का समय चल रहा है, 4 मिनट का समय बाकी है और इस समय जो लीड है वो गढ़वाल हीरोज़ के पास है 3-0। अच्छी लीड है और इस लीड को कम करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। Absolutely right there. My co-commentator MS Negi saying that both the score lines of the semi-finals have been the same. 3-0 to Himachal FC, beating Uttarakhand FA, and now it's the Garwal Heroes scoring 3 past the Assam Rifles. That's not a good challenge coming in from Daniel Mete. Just getting a run in towards the end, trying to impress the coach. Sukraj with a good ball. He's been solid today once again, as we see the changes that took place slightly earlier. Laisham Suraj, who's on the ball now, coming in for Nirmal Singh Bisht, who had a really good game, and he's also been fouled as he's come on. Just going for a cheeky little nutmeg. So the stage is set now for the final of the Himalayan Cup. It will be the Garwal Heroes taking on Himachal FC day after tomorrow, and tomorrow it will be the third place battle between Uttarakhand FA and Assam Rifles. Still 90 seconds to go in this game, which was dominated by the Garwal Heroes. A couple of good chances for the Assam Rifles. They didn't take it when it fell to David and Roger, the 10 and 11. But speaking of taking chances, it's Richage Kharbani took one yesterday and took two today beautifully well. And then Jaydeep, who set him up for one, himself scored a cracker of a goal to make sure that the Heroes meet the Himachal FC side tomorrow, or rather day after, for the final. And the coach Vivek Rawat will be very happy. He said they don't have to put pressure on themselves, and they haven't played a pressure-filled game. Garwal Heroes have played an open game. They've been the better side today, and they will go home knowing that they will be playing the final in a day's time. Nicely done there by David, but he loses his footing as he tries to get past the skipper, who's had another solid game, Neeraj Bandari. Wins the goal kick for himself, and that should be the end of it. Clean sheet this time round for Lionel.
And the Garwal Heroes will meet Himachal FC in the final of the Himalayan Cup. They do so by both winning via the same margin of victory, 3-0 for the Heroes, as they defeat the Assam Rifles, who will play Uttarakhand tomorrow in the third place battle. And what a game by the number 18 Ritesh Kharwani, getting 2 goals and winning the Man of the Match award. Take a bow, young man. You deserve to be smiling and getting the plaudits from your teammates and everyone else. And that's all from me, Liam Bain. Thank you for watching as the Garwal Heroes storm into the final with a 3-0 victory.
तो अब बारी है प्लेयर ऑफ द मैच की, और सबसे जो एक मेन अवार्ड होता है, जो खिलाड़ी सबसे बेहतर करते हैं उनको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच। आज के इस बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज ने 3-0 की धमाकेदार जीत की, तो अब प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजय रावत जी, ONGC से आप हैं, बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं, और इसके अलावा चेतन गुरुंग जी, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएँ और इस पुरस्कार को आपने देना है। तो अब बारी है, दिल थाम कर बैठिए, पुरस्कार दिया जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच का, और इस पुरस्कार को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय रावत जी और चेतन गुरुंग जी। चेतन गुरुंग जी वरिष्ठ पत्रकार अगर हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएं। चेतन गुरुंग वरिष्ठ पत्रकार, आप तक हमारी आवाज़ है, आप थोड़ा जल्दी करें प्लीज़, थोड़ा जल्दी आ जाएं। तो प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे दिया जाना है। एक हाई वोल्टेज मुकाबला आपने देखा, गढ़वाल हीरोज की टीम इतना मजबूत नहीं माना जा रहा था, लेकिन दमदार खेल दिखाते हुए यंगस्टर्स ने 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की है, पहुंच गई है फाइनल में। हिमाचल FC के साथ 7 तारीख को होगा फाइनल। फिलहाल अभी हम देंगे यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच। तो चेतन गुरुंग जी यहाँ पर आ जाएं, थोड़ा तेज चल के फुटबॉलर की तरह। तो ठीक है सर, ठीक है। तो अब बारी है अनाउंस करने की प्लेयर ऑफ द मैच। आज के इस दूसरे हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले को जिस खिलाड़ी ने प्रभावित किया, जिस खिलाड़ी को माना गया प्लेयर ऑफ द मैच, वो खिलाड़ी हैं 18 नंबर रिची खरवानी। तालियां, क्लैपिंग हो जाए रिची खरवानी, 18 नंबर जिन्होंने पहला और दूसरा गोल मारा। आपको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच, और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, काफ़ी उम्र के हैं, 18 नंबर के जर्सी रिची खरवानी। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रहा है प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत बड़ा मैच था ये, बहुत बड़ा गोल किया रिची थोड़ा रिची बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं आप, और 2 गोल बैक टू बैक मारे आपने, तो कैसा लग रहा है? खुश तो बहुत होंगे आज। I like to thank my teammates. Without them, I cannot even score this goal. So thank you very much. बेस्ट ऑफ लक। तो ये रिची खरवानी जो बोलते कम है, खेल ज़्यादा दिखाते हैं, तो आज के प्लेयर ऑफ द मैच इनको दिया गया है। और 7 तारीख को होगा फाइनल, कल 2 बजे आप जरूर पहुँचें, यहाँ पर 3rd प्लेस के लिए मैच होगा। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुंग जी। गुरुंग जी, कैसा रहा फुटबॉल का मैच, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं, खेल प्रेमी, फुटबॉल प्रेमी, उन सभी का मैं भी आभार करना चाहूँगा कि आप लोग गए तो खेल भी जिंदा है। मैं अपना भी थोड़ा बताऊँ, मैं पत्रकार तो हूँ, मैं साथ में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का CEO भी हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मैं उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो शायद पता नहीं होगा लोगों को। देवेंद्र बिष्ट को मैं जब ये खुद भी खेलते थे मैं तब से जानता हूँ, ये अजय रावत भी ये जब क्लब से खेलते थे, गढ़वाल स्पोर्टिंग से, और ये तब भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे। और ये दौर वो था जब ये पवेलियन भरा रहा था 68 डिस्ट्रिक्ट लीग में, और सुपर लीग में तो बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। तो धीरे धीरे फुटबॉल पता नहीं क्यों अवसान की तरफ आया था, लेकिन ये देवेंद्र बिष्ट जो है, इन्होंने फिर से एक बहुत अच्छी कोशिश की है, इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे फुटबॉल को फिर से बढ़ावा मिलेगा। देहरादून फुटबॉल का गढ़ रहा है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले, राम बहादुर क्षेत्रीय ओलंपियन निकले, यहाँ से वीर बहादुर गुरुंग निकले, एशियन गेम्स में खेले वो, और भी कई ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर रहे जिनका नाम लेने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से एक बार फिर देहरादून का जो गौरव है फुटबॉल का, वो फिर से ऊपर आएगा। और देवेंद्र बिष्ट को मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा, उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, और अभी फाइनल में मुझे उम्मीद है आप सभी लोग आएंगे, और अपने साथ में और भी जो दर्शक है, अपने दोस्त है, सबको लेकर आएंगे। ये आप लोगों का योगदान होगा फुटबॉल को बढ़ावा देने का। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुंग जी, धन्यवाद अजय रावत जी, धन्यवाद अरोड़ा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्राइज सेरेमनी को और अच्छा बनाने के लिए। तो अजय रावत जी धन्यवाद आप सभी का। और अब मेरा निवेदन रहेगा विवेक रावत जी। विवेक रावत कोच गढ़वाल हीरोज़ के, थोड़ा फ्यू वर्ड्स, और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं विवेक रावत जी। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं गढ़वाल हीरोज़ के कोच विवेक। सब कुछ अच्छा हो गया, और एक फिल्म का डायलॉग है अमिताभ बच्चन की फिल्म का, खुश तो बहुत होंगे आज। हाँ, खुशी तो है, बट ज़्यादा खुश होंगे जब फाइनल लेके जाएंगे, तो उसी की तैयारी है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले आवर फाइनल मैच। मैंने जब आपसे सुबह इंटरव्यू लिया था दोपहर में मैच शुरू होने से पहले, तो हमने भी ये कहा था कि आपने बहुत कम उम्र के लड़कों की टीम उतारी है, और एक काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो आज जो सेमीफाइनल मैच हुआ, सेटिस्फाइड हैं आप ये इन लड़कों से? आप यही उम्मीद कर रहे थे? आपको क्या लगता है?
आपकी टीम ने जो खेल दिखाया है, हिमाचल एफसी की टीम ने जो खेल दिखाया है, सेम स्कोर पे मैच खत्म हुआ और ये फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा स्टेप है और हिंदुस्तान की फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा है कि आपने कम उम्र के लड़कों को उतारा। तो आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, बेस्ट ऑफ लक फाइनल। थैंक यू वेरी मच। तो विवेक रावत, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल 2 बजे जो मैच होगा उसको आप जरूर देखिए। 7 तारीख को होना है ग्रैंड फिनाले फाइनल। तो आप सब लोग बने रहिए और हम आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारे लोगों से मिलाते रहेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।